ओके पता नहीं नवीन, आई थिंक म्यूट करो सबको और खाली जो बोल रहा है उसको अलाउ करो, बिकॉज सम साउंड इज कमिंग. यस यस सबको म्यूट करो. ठीक है. Okay, we are starting. सुकुमार. Good afternoon, everybody. सबको मेरी तरफ से नमस्कार. Today we have among us Gaurav Gupta ji from Delhi, and we'll be having Sri Bimal Jain ji also from Delhi. Both of them need no introduction since GST is their domain, and they have continuously been enriching us on the topic from time to time as and when requested for. We have Sri Vikas Banka ji as chairman of the session. Sri Gaurav Gupta ji will take up the topic how to handle other show cause notices under GST. So I find this session a very important and enriching session. I welcome Gaurav Gupta ji, Vikas Banka ji, and all my friends who have joined in and who are about to join in short time. I now request Nitesh ji, Joint Convener of Views Exchange and past Chairman, to take up and take forward this session. Welcome, Nitesh ji. Thank you, Saroj ji. Good afternoon, everyone. My voice is echo हो रहा है क्या? No, it's okay. It's okay. Okay, great. So thank you. Naveen Girdhari ji is there, Chairman of the session, Vikas Banka ji, Gaurav Gupta ji. Welcome you all, friends. I tried in my different capacity as a member, as the ICASA member, as the EIRC member, to support the profession in any matter. I would like that members may come forward with the topics on which we should organize seminars. With these, may I request the Girdhari ji to kindly introduce the learned chairman and speaker, please. Thank you, sir. Today we have amongst us CA Vikas Kumarji Banka. Vikas Kumarji Banka is a practicing chartered accountant. He stood 31st rank in the CA intermediate exam held in May 1998. He has over 21 years experience in the field of direct and indirect taxation. He is faculty in the GS training programs organized by the government offices, West Bengal Department, Commercial Tax Department. He is chairman in the committees formed by DTPA, VIP Circle, and other study circles. He has actively contributed in the preparation of revised technical guide to GST annual return, guidelines notes on treatment on GST, weighting of published background material on the GST, guidance note on bank branch audit. He has credited many write-ups and articles of various magazines and tax group. He is regularly contributing articles and has organized and attended more than 500 seminars during the last years. With these words, we welcome CA Vikas Kumarji Banka. Now, I have opportunity to introduce Advocate Dr. Gaurav Gupta. Gaurav Gupta ji is from Delhi. He is a college. He has done his college from Ram College of Commerce, Delhi. He is the fellow institute members. He has completed his master law LLM in 2021 from OP Jindal Global University. He has completed ISA, doctorate in taxation from University of France. He is advocate in Delhi High Court and Tax Tribunal. He has more than 18 years experience in handling the direct indirect taxes in Delhi High Courts. He is representing various clients, FMCG companies, 500 Fortune companies,
in GST matters. He is specialized in handling the litigated matters in indirect taxation. He is also co-opted member of Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee of ICAI. He has also authored books on many titles on the GST, including GST Law and Practice, Handbook on GST, Law and Practice, GST Guide for Practitioners, GST Manual, GST Reference and Manual, Audit and Annual Return on GST. Earlier, he has also written books on service tax. He has addressed more than 600 seminars. With these words, we welcome Dr. Gaurav Gupta with clapping the hands. Thank you, Girdhari ji, friends. We have Surendra Surana ji, our core committee member. We have Manoranjan ji, who is patron member. We recognize their presence. Friends, today's chairman, Vikas Banka ji, he has written with two other members of our region, Ayush ji and DS Agrawal ji, a book on GST, which is published by the Taxman. So we thought that why shouldn't we should invite the three co-authors who are from our region as the chairman in the three VCMs of the VCMs. So with this, welcoming the Vikas Banka ji, and it's over to Vikas Banka ji, please. Thank you, Nidesh ji. Thank you for encouraging words. And good evening to all of my friends and professional colleagues. At the very outset, I would like to give my heartfelt gratitude towards View Exchange CA Study Circle EIRC and its office bearer, Convener C. Soika ji, Joint Convener Ritesh Moore ji, Secretary View Exchange Girdhari Sharma ji, Naveen ji, for giving me this opportunity to chair the session on such a burning topic under the GST. My dear friends, we all know whenever we are hear about the GST, we will surely whisper to ourselves, यार GST में तो बहुत ज्यादा ही notice आता है. Whenever we are talking about the GST, obviously, I think each and every chartered accountants make a comment, every advocates make a comment, every tax practitioner make a comment कि GST में तो जब देखो तब notices आते रहते हैं सर, notices से ही परेशान है. To crack the procedure and the method along with how to handle and understand the basis of notice, we have two best speakers of India are with us. CA Gaurav Gupta ji, welcome you sir, and CA Bimal Jain sir. Welcome both of you to the land of Ma Kali sir. Gupta sir, once again we are welcoming to you on the land of Ma Kali sir. Friends, normally GST notices under GST are issued with respect to assessments like self-assessment, provisional assessments, or relating to the scrutiny of returns under section 61, 62, 63, 64 like that. And further notices are issued under section 73 and 74 of the CGST and SGST Act. Today, we have the two eminent speakers here to enlighten us on the caption subject, notices under the GST. My dear friends, sir, I request you to please enlighten us with the meaning of notices, pre-notices with respect to DRC 01A, and further how to differentiate between the section 73 and 74 notices in respect to suppression of fact or willful misstatement and etc. Sir, whenever we are facing the notice, department always used to issue the notice under section 74 without giving the reasonable ground why they are want to extend the time limit of the issuance of the notice. They never used to section 73. I think you will also appreciate this wordings that we always they always want to extend the 74. So how to save ourselves from 74 when there is no suppression of fact, no suppression of willful misstatement like that. So please enlighten us on that topic. And I know, my dear friends, all of you are want to listen our eminent speaker for the day. So I will not be act as a hurdle in between, handing over the proceedings to Gaurav Gupta sir for his deliberation. Over to you, sir. Welcome you once again, sir. Gaurav sir. Thank you. Thank you, Vanka sir. Respected Nitesh More ji, respected Chairman of the session, Vikas Banka ji, respected members of Views Exchange, Shri Surendra ji, Shri Manoranjan ji, Shri Saroj ji, and all other learned members of Views Exchange CA CPE Study Circle, a very good evening to all of you. At the outset, I extend my warm thanks to the committee members, to my session chairman, and
as you have just heard him, आपने उनको सुना है, जैसे सेशन शुरू होने से पहले ही SCN को लेके बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने उजागर कर दी हैं। शो कॉज नोटिस क्या है, उसको कैसे हम एड्रेस करें, उसमें हियरिंग्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर जब आता है तो क्या उसके बाद भी देयर इज समथिंग टू लेफ्ट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू लुक इनटू। I would go step by step, and for this I would request the host if he can allow me the presentation of the PPT. Can everyone see the screen, sir? Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. Visible, sir. Visible. Right. Sir, show cause notice. What is show cause notice? Show cause notice is primarily an opportunity to the noticee, to the taxpayer. He may be registered, he may not be registered, to show cause or to produce his view or submission along with supporting documents as to why a particular action, please mark my words, particular action, it can be a demand, it can be a penalty, or it can even be any other action under the statute, why that particular action should not be taken against him. As simple as why should your composition scheme should not be cancelled. For that also, show cause notice is must. So if you look into the entire act, there are around 18 places where the show cause notice is required to be served on the noticee, on the taxpayer, before a detrimental action can be taken against such particular noticee or the taxpayer. So section 10, when the officer wants to cancel your composition scheme, when he wants to draw the regular payment of tax, section 21, recovery of the credit wrongly distributed by the ISD, section 35, failure to record the supply of goods or services, section 50, interest on delayed payment. Very important. Here itself I am marking to your knowledge that even for the recovery of interest, section 50, a show cause notice is must. Section 51, section 52, TDS, TCS, 63, 65, 66, 73, 74, all these sections need that a show cause notice should be first issued, served on the taxpayer, and thereafter the action which is to the detriment of the taxpayer can be taken by the proper officer. Now, the first question which Vikasji has said, section 73 vis-a-vis 74. Sir, अगर हम कभी भी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट का सबसे पसंदीदा सेक्शन जो है वो सेक्शन 74 है। 73 के अंदर हमने बहुत रेयरली कभी शो कॉज नोटिसेस देखे। क्यों? 73 कहता है आपसे गलती हो गई है, आप ये टैक्स पे कर दीजिए। और 74 क्या कहता है? 74 कहता है आपने ये टैक्स चोरी करने की कोशिश करी है अंडर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन, इन तीनों में से किसी भी एक कारण से, इसीलिए आपसे हम क्यों ना ये टैक्स वसूलें। तो सर एक है लाइट नोट पे आपसे गलती हो गई है, क्यों नहीं आप ये टैक्स हमें देंगे, और दूसरा नहीं आपने इसको चोरी करने की मंशा से अंडर फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन। देखिए 74 में 3 कारण, इन तीनों में से एक कारण असेसी के ऊपर लागू होना चाहिए, तभी वो 74 की प्रोसीडिंग्स बनेंगी। या तो वो केस होना चाहिए फ्रॉड का। फ्रॉड मींस व्हेन यू हैव अ क्लियर इंटेंट टू इवेड द टैक्स, व्हेन योर इंटेंशन वाज फ्रॉडुलेंट टू डिफ्रॉड द एक्सचेकर, आप गवर्नमेंट के टैक्स को चुराना चाहते हैं। सेकंड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, आप जानते थे, आप चोरी नहीं भी करना चाहते थे तब भी आप जानबूझ के आपने मिस स्टेटमेंट दी। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी और आपने उस पर्टिकुलर सर्विस का डिस्क्लोजर नहीं करा, कहीं पे रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने आपसे जब पूछा चिट्ठी के माध्यम से क्या आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी, तब आपने जानबूझ के, ये जानते हुए कि आपने करी है, फिर भी अपने टैक्स को बचाने के लिए आपने उनको लिख कर दिया नहीं मैंने कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं करी।
In that particular case also, it is a willful misstatement for evasion of tax. और third, suppression of fact. आपने अपनी टर्नओवर पूरी नहीं दिखाई, आपने अपना आईटीसी प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया, सप्रेस की इंफॉर्मेशन. ये 3 कारण ऐसे हो सकते हैं जब सेक्शन 74 के अंदर आपका शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है. फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने बाकी सब सेक्शंस भी डिस्कस किए, बट इफ वी विल गो एंड विकास जी, मैं परमिशन ले रहा हूं. आई एम नॉट स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश. मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करूं या शुड आई गो इन इंग्लिश प्लेन जैसे आपने? मिक्स सर, इट विल बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक. ठीक है सर, थैंक यू सर. तो आपने देखा 73 और 74 को ही मैं थोड़ा स्ट्रेस करूंगा, बिकॉज यही वो शो कॉज नोटिस है जहां पर सबका फोकस रहता है. 73 जहां पर आप शॉर्ट विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन नहीं करते हैं, और 74 जहां पर इन तीनों में से किसी भी एक कारण के तहत आपने टैक्स को चोरी करने की कोशिश करी. सो ऑब्वियसली जब डिपार्टमेंट आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी पकड़ेगा तो वो ये नवीन जी, लगता है गुप्ता साहब का डिस्कनेक्शन हो गया. I think so. उनका Yes, शायद yes, yes. डिस्कनेक्शन हो. प्लीज कॉल हिम. Yeah. नहीं हेलो, तो ना गुप्ता जी का शायद वो डिस्कनेक्शन हो गया. आप उनसे एक बार बात कर लीजिए सर. विकास सर, आई थिंक एक पार्टिसिपेंट ने बोला कि ना that he wants it in complete English because I think he must not be comfortable. Okay. We will take the matter with him. Yes. क्या हुआ? ओके, रिस्टार्ट हो गया. नहीं, नॉट एन इशू. ठीक है, कंप्यूटर उनका रिस्टार्ट हो गया वो. हाँ, ठीक है. All the participants, there's a small technical issue, so we shall be resuming in 2 minutes. Sir, my humble apologies, sir. There was some technical snag which came up. My apologies. I am just putting my screen again online. Yes, sir. Please, sir. Please. Request host to please allow the screen sharing. You can try now. सर, ये अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट कुछ भी गलत करने से पहले आपको एक शो कॉज नोटिस देगा. मेरे कंप्यूटर ने अभी मेरे को कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया था अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होने से पहले. So that is the harm which is caused when no opportunity is given to the other person. So under 73 and 74 जो हम बात कर रहे थे, अगर आपके इवेजन की मंशा डिपार्टमेंट को दिखेगी तो वो 74 में करेगा, अदरवाइज वो 73 में करेगा. दोनों में फर्क क्या है सर? 73 के तहत जो पेनल्टी है और जो पीरियड है जहां तक एक शो कॉज इशू हो सकता है, जो एक टैक्स आपसे रिकवर किया जा सकता है, वो कम है. और 74 के अंदर आपसे 100% पेनल्टी, एंड 74 इज ऑल्सो पाथ which can lead to prosecution under section 132.
Please also understand that. 73 will not lead to a prosecution under 132, or for that matter, many penalties under 122. But 74, if a demand is confirmed under 74, there are likely chances that ये एक prosecution या penalty की तरफ और matter को अग्रसर कर सकता है. तो friends, whenever there is a notice, जब भी आपके पास कोई notice आए which is under section 73, you can be very comfortable in replying because the department feels that you never intended to waive the tax, but you have still not paid the tax which it wants to recover. But 74, if a SCN is served on the taxpayer under 74, then be very, very careful in answering that particular show cause notice. How should we start? Now that is the first question. I'll speak about the very requisites of the show cause notice. आपके पास एक show cause notice आता है, ये नहीं कि हमें आते ही उसको रिप्लाई करना शुरू करना है और हमें 2 दिन में रिप्लाई करके खत्म करना. नहीं सर. Show cause notice is a document which need to be looked into very, very sensitively, very, very detailed manner. You should not leave even a single line. I give you a very small example. कल हम एक ऑर्डर को पढ़ रहे थे. ऑर्डर को जब हमने अपीलेट ऑर्डर को पढ़ा, सिर्फ एक लाइन पढ़ने से रह गई, 3 बार पढ़ लिया था उसके बावजूद. और रात को जब फाइनल हो रहा था, जब हमारा रेक्टिफिकेशन का लेटर, then that particular line struck, एकदम it struck, and the entire debate in one of the submissions changed. So आपको बहुत ध्यान से शो कॉज नोटिस को पढ़ना है. शो कॉज नोटिस को इतने ध्यान से पढ़ने की जरूरत क्या है सर? शो कॉज नोटिस की प्रोसीडिंग सबसे पहले जो सबको क्लियर करना है, शो कॉज नोटिस की प्रोसीडिंग्स आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं. जितने प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने वैट और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करी है, यूजुअली क्या होता है, they consider show cause notice as a matter of scrutiny. No sir, show cause notice आया है, डिमांड आई है, आपको ये समझना है कि वो डिमांड के लिए आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिंपली जो डिमांड आई है उस पे फोकस करना है, उसके कारणों पे फोकस करना है, फॉर व्हाट रीजन. फिर आपको उसके प्रोविजंस पे फोकस करना है, उसने कौन से सेक्शन इवोक करे हैं टू इम्पोज दैट पर्टिकुलर टैक्स और टू रिकवर that particular refund, or for that matter to disallow the ITC. इन तीनों चीजों में से कौन से provisions उसने evoke करे हैं, and then you should proceed to answer your show cause notice. So what are the basic features of a show cause notice? The first feature, which is very, very important to understand, show cause notice is the foundation for adjudication. My dear friend, शो कॉज नोटिस उस ऑर्डर की बुनियाद है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपनी सेलिब्रेटेड जजमेंट वृंदावन बेवरेजेस में कही थी. कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्डर शो कॉज के बियॉन्ड नहीं जा सकता. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. एक ऑफिसर ने आपके ऊपर एक शो कॉज इशू किया. उसने कहा कि सर आपने अपने आइटम के ऊपर 18% टैक्स पे कर रखा है, पर ये आइटम 28% पे टैक्सेबल है. और उसने उसके HSN बता दिए कि आपने ये HSN यूज किया जबकि आपका सही HSN दूसरा था. या फॉर दैट मैटर एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत लाइव एग्जांपल है. एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ कि आपका जो एग्रीकल्चरल आइटम है, आपकी जो आइटम है दैट इज फूड ग्रेन एंड इट इज पैक्ड इनटू अ यूनिट कंटेनर. जितने लोग उसमें डील करते हैं उनको पता है ये यूनिट कंटेनर क्या टर्म है. नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में इसका जिक्र है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. एंड इट बियर्स अ ब्रांड नेम, सो इसके ऊपर 5% टैक्स लगना चाहिए. आपका कहना क्या था? सर मैंने पैकेट के ऊपर सिर्फ अपनी कंपनी का नाम छापा है, एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर नेम प्रिंटिंग ऑफ माय ओन कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर FSSAI norms, and therefore it is not a brand name, and therefore I will not fall within the ambit of 5% taxation, but I will remain in the exempted. Now the officer has alleged something. While you were giving the submission, you also produced a lot of records in terms of valuation. In the end, after examining all the document, the officer found that even your valuation is wrong. Why your valuation is wrong? You have supplied certain goods to your associated enterprise which is not at the market value. Right, sir?
नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट ही हैज डन इज इशू, उसने शो कॉज नोटिस किया था कि मेरे को आपसे 5% टैक्स चाहिए 1 करोड़ की वैल्यू, पर बाद में जब उसने ऑर्डर पास किया तब उसने कहा आपकी वैल्यूएशन भी गलत है और आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए 1 करोड़ 10 लाख। नाउ माय डियर सर, व्हेन वी से एससीएन इज द फाउंडेशन फॉर एडजुडिकेशन, अगर एससीएन के अंदर वैल्यूएशन का चैलेंज रेज ही नहीं हुआ था, अगर ऑफिसर ने वो एलेज ही नहीं करा था, then he cannot pass an order on that particular allegation which is not there in the SCN. तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, SCN का ऑर्डर कभी भी SCN के बियॉन्ड नहीं जा सकता। हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर देखे हैं जहां पर SCN में वो एलिगेशन थी नहीं। सो फॉर एग्जांपल SCN में जनरली लिख दिया, जो अभी विकास जी ने भी कहा था, चेयरमैन साहब ने बहुत सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा था, कैसे हम 74 के और 73 के शो कॉजेस को डिफरेंशिएट करेंगे। सर यूजुअली होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट जब इशू करता है बहुत सारे ऑफिसर सिंपली लिख देते हैं यू हैव इवेडेड द टैक्स अंडर फ्रॉड और विलफुल स्टेटमेंट और सप्रेशन, सिंपल लिख देते हैं, एंड देयरफॉर व्हाई द टैक्स शुड नॉट बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 74 फ्रॉम यू। माय डियर फ्रेंड्स, अगर केवल एक स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके शो कॉज में और उसने उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन, उसका रीजन आपको नहीं दिया है, that very requirement can make the entire show cause infructuous, void. आपको सिंपल ये लिखना है कि सर while there is an allegation, there is no reason which has been alleged, which has been given to such particular allegation, and therefore the entire proceedings are void ab initio. आपने अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लगाई है तो मुझे उसके तर्क, उसका एविडेंस, उसका रीजन, उसका प्रोविजन सब कुछ चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो वो शो कॉज नोटिस इट विल नॉट होल्ड गुड ग्राउंड्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके पास एक शो कॉज नोटिस आया, उसने कहा सर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 0 नहीं 5% जीएसटी लगना चाहिए। ऑफिसर ने ये लिखकर दे दिया और उसमें लास्ट में लिख दिया हमारा जो आपका एग्जेम्पशन है विच यू हैव टेकन under notification number 2/2017 is wrongly taken. Now please understand the problem. उसने HCN भी करेक्ट लिया, वैल्यू भी करेक्ट ली, टैक्स रेट भी करेक्ट लिया, पर उसने एलिगेशन के अंदर ये नहीं बताया कि कितनी डिमांड वो CGST की कर रहा है, कितनी SGST की कर रहा है, कितनी IGST की कर रहा है। अब क्योंकि उसकी एलिगेशन ऑफ डिमांड क्लियर नहीं है, then also your SCN is baseless. आपकी कौन से टैक्स की रिकवरी के लिए वो शो कॉज इशू हुआ है? अगर हम कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, सर सॉरी, जब से GST आया है 5 साल होने को आए हैं, आज तक दिस इज नॉट 1 नेशन 1 टैक्स। देयर इज अ CGST एक्ट, देन यू हैव n number of SGST एक्ट, and then you have IGST एक्ट, compensation cess act. There is a uniform tax across India. There is not one tax across India. Please understand and appreciate that. So अगर ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस में ये नहीं बताया कि वो कौन सा टैक्स आपसे रिकवर करना चाहता है या कौन सा डिसअलाउ करना चाहता है, तो वो शो कॉज अपने आप में इनफ्रक्शियस हो जाएगा। और आप देखेंगे अभी नए शो कॉजेस जो इशू हो रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट। सर सेकंड, शो कॉज नोटिस कैन ओनली बी इशूड आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी। ऑफिसर के पास 2 पेपर आए, उसने फटाफट एक शो कॉज बनाया और उसने लिख दिया इट इज सीन एंड इट अपीयर्स, वेरी फेवरेट वर्ड ऑफ द ऑफिसर, इट अपीयर्स फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट देयर हैज बीन अ इवेजन टू द ट्यून ऑफ सो मच एंड व्हाई इट शुड नॉट बी। कोई ASMT 10 आज तक इशू नहीं हुआ था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, ऑफिसर के पास एक रिटर्न फाइल मैंने करी थी, केवल उसके बेसिस के ऊपर उसने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया। दैट शो कॉज इज आल्सो कंप्लीटली इनफ्रक्शियस बिकॉज उसने शो कॉज बेस्ट जजमेंट के तहत इशू नहीं करा है, उसने नॉर्मल शो कॉज इशू करा है, बेस्ट जजमेंट इवोक नहीं करी है। ही कैन नॉट इशू दैट शो कॉज विदाउट अ प्रॉपर इंक्वायरी। सो अगर आपके शो कॉज से पहले, जैसे बंका साहब ने कहा कि DRC 01A, मैं तो अभी उससे भी पहले जा रहा हूं, अगर आपके शो कॉज से पहले ASMT 10 इशू नहीं हुआ, प्लीज चैलेंज, क्योंकि आप ये एलिगेशन आपकी साइड से लगेगी
that there has been no inquiry in the matter and the show cause has been issued in a hasty manner without inquiry by the department. Number 3, show cause notice should be in writing and unambiguous. कई बारी शुरू में देखा गया था, जो कि सेंट्रल एक्साइज के दिनों में शुरू में जब सर्विस टैक्स नया आया था, एक लेटर इशू कर दिया जाता था डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें सिंपली लिख दिया जाता था ये आपकी टैक्स डिमांड है और आपको ये टैक्स डिमांड पे करनी है। अब हमने यही चीज जब जीएसटी में देखी तो कैसे देखी, कुछ स्टेट ऑफिसर्स ने बहुत ही इमैच्योर शो कॉज इशू किया। कैसे किया? उन्होंने कहा आपका टैक्स रेट 0 नहीं 5% होना चाहिए। मैं सेम एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहा हूं, आप अपनी रिकॉर्ड से अपने अमाउंट को कंप्यूट करिए और उस टैक्स को पे करिए। अगर किसी भी शो कॉज में अमाउंट भी नहीं लिखी गई है, दैट पर्टिकुलर शो कॉज इज आल्सो अ इनवैलिड शो कॉज। अगर आपका ऑफिसर डिमांड को पोस्ट शो कॉज कंप्यूट करेगा, it is a invalid exercise because inquiry is happening post issuance of show cause notice. We have also seen there are cases where a statement is being taken up by the officer after the issuance of show cause notice. So that statement is inadmissible in the proceedings for the very simple reason the inquiry should have preceded the show cause and not vice versa. Why inquiry should precede the show cause? Such show cause is the final opportunity to the taxpayer, meaning thereby आपके जितने भी एविडेंसेस थे उनके बेसिस पे डिपार्टमेंट ने जो भी अपना निष्कर्ष निकाला और आपसे डिमांड ऑफ ड्यूटी एलेज करी, उसके बियॉन्ड कोई नया एविडेंस ड्यूरिंग शो कॉज नहीं प्रोड्यूस हो सकता, नहीं इन्वेंट हो सकता। अगर कोई नया इन्वेंट होगा तो उसके लिए एक और शो कॉज इशू करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, वो प्रोसीडिंग्स के बीच में एडमिसिबल नहीं कर सकता। आई एम पुटिंग अ वेरी स्मॉल थॉट टू यू। ये सब चीजें क्यों जरूरी है? जब भी आप शो कॉज और उसका ऑर्डर इन ओरिजिनल उठाएंगे, और बहुत सारे ऑर्डर इन ओरिजिनल कंफर्म करते हैं डिमांड को, प्लीज अपने शो कॉज और अपने ऑर्डर इन ओरिजिनल को सामने रखिए और जो ऑर्डर इन ओरिजिनल ने कंफर्म करा है, चाहे वो एलिगेशन है, चाहे वो एविडेंस है, चाहे वो डिमांड है, उसका आप अपने शो कॉज के अंदर रेलिवेंट पैराग्राफ जरूर देखिए कि ये सब एलिगेशंस, ये सब एविडेंसेस, ये सब डिमांड क्या मेरे शो कॉज में थी? अगर नहीं थी, देन शो कॉज बीइंग द फाउंडेशन, the entire order vitiates the very decision given by Honorable Supreme Court in the case of Vrindavan Beverages and is liable to be set aside. Take very strong grounds on these. What we do, we as chartered accountants, what we do, हमें जब भी शो कॉज आता है हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, हम उसके एनालिटिकल पार्ट में फंस जाते हैं, हम उसके लीगल पार्ट में नहीं जाते। एंड आई थिंक देयर इज वेयर most of the chartered accountants fail. शो कॉज के अंदर 60% पार्ट लीगल है, 40% आपका एनालिटिकल एंड कॉम्प्यूटिकल। क्यों? आपकी डिमांड में थोड़ा जो बचेगा वो क्या बचेगा? कम ड्यूटी। आपने टैक्स पूरे पे कंप्यूट कर दिया, कम ड्यूटी होना चाहिए था। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी माइनर पार्ट ऑफ द एंटायर शो कॉज। शो कॉज इज अ बिगर एस्पेक्ट, बिगर आई वुड से डॉक्यूमेंट। आपको उसके बाकी सारे डायमेंशंस पहले देखने हैं और कंप्यूटेशन सबसे आखिरी। तो आपका सबसे पहला क्या था कि क्या आपकी एलिगेशंस, आपकी डिमांड और आपके एविडेंसेस क्या प्रॉपरली हैं शो कॉज में। फिर इसी की एक्सटेंशन क्या, आपके पास एक शो कॉज नोटिस आया, उसमें लिखा हुआ था वी आर रिलाइंग इन आरयूटी नंबर 1 2 3 4 5। शो कॉज में मेंशन्ड है, पर उसके पीछे कोई भी आरयूडी, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे वो शो कॉज इशू हुआ है। सो फॉर एग्जांपल दे से वाइड लेटर डेटेड सो एंड सो, दिस हैज बीन एडमिटेड बाय द assessee. Sir, even though it is your letter, if it is used as a evidence in the show cause notice, that letter is duty bound to be attached to the show cause notice. Every evidence which is being used by the show cause notice should be attached to that particular show cause notice. उसने कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई भी एग्जामिनेशंस, कोई भी एफिडेविट,
कोई भी proof, that can be a certificate from a laboratory or whatever, अगर show cause notice ने rely करा है, then in that particular case, the show cause notice will contain a copy of that particular evidence, and that particular evidence will be given वो assessee को, वो taxpayer को दिया जाएगा ताकि वो भी उसको एग्जामिन करे और एग्जामिनेशन करने के बाद उसको अपने रिप्लाई के अंदर वो यूज कर सके. अगर हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया और डिपार्टमेंट मिस कर गया, तो ये नहीं है कि आपने अपने रिप्लाई में लिख देना है सीधा, आपने एक लेटर लिखना है कि सर देयर इज अ मेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर RUD in the show cause notice. I request you to kindly provide me a copy of this particular evidence, and then you rebut that particular evidence once you are in receipt. But despite your once or twice requisition, आपने एक दो बारी अगर requisition दी, फिर भी डिपार्टमेंट ने आपको नहीं आपका एविडेंस दिया, then you have every right to say, in absence of the evidence, my very right of natural justice, of a fair hearing is vitiated. I am not given a proper opportunity of being heard, because unless I know, Komalji, your mic is getting unmuted again and again, please see. Umeshji, you have raised your hand. You want to say something, sir? Umeshji? Sir, I think he must have raised his hand by mistake. No problem, no problem. So वो है ना, क्लास में अगर कोई भी हाथ खड़ा दिख जाता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है. चलिए सर, again my apologies because I was in the flow of what I was saying and it was not a mechanical flow, so I'll just start from the next point. So show cause notice के अंदर आपको ये जो एविडेंस की अहमियत है, अगर आपके पास कोई नहीं आया है, वो आपका हक है, आपका राइट है, और अगर उसके बिना आपको रिप्लाई करने के लिए कहा जाता है, then it vitiates your very right of being given a fair hearing, a proper hearing, and therefore the principles of natural justice are not followed and the entire exercise of hearing will be vitiated. Intimation of demand to precede the SCM. Sir, एक फॉर्म है DRC 01A, वो क्या है सर? That is an intimation of the demand. That should be preceding, or that should be preceded before SCM. Now question is, last year the language of the rule was amended. Earlier it was saying DRC 01 shall be issued. It has been amended and now it is saying DRC 01A may be issued. मतलब पहले ये कहा गया था कि DRC 01A, DRC 01 शो कॉज नोटिस से पहले देना है. आप अगर किसी के अगेंस्ट शो कॉज करना चाह रहे हैं, उससे पहले उसको बताइए कि हम आपके अगेंस्ट ये शो कॉज करना चाहते हैं और ये डिमांड आपके यहाँ से बनती है. अगर वो व्यक्ति नहीं जमा करता तो आप शो कॉज करिए. बट लास्ट ईयर उसको चेंज कर दिया गया, शैल को मे कर दिया गया. एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिबेट. Is DRC 01A required to be mandatorily issued by the proper officer? Because the word is may, the doubt has been created, because now, as per reading of many experts, it might be said that may is a word of choice. May gives you a subjectivity. It will depends on a case-to-case basis whether the officer want to issue DRC 01A or not. My dear friend, if may in this particular case is to be read as a choice to the officer, then tell me, will there be any officer who will issue DRC 01A? It will be very rarest of the rare cases where DRC 01A will be issued before DRC 01. So in my humble opinion, the word may should be read as shall, and therefore every person should be first given an opportunity to pay the amount if the department alleges an amount, and if he does not pay, then and then only that particular person should be issued a SCM. Sir, वो क्यों है? उसका एक कारण ये भी है कि आपकी जो पेनल्टी है वो SCM से पहले और SCM के बाद फर्क हो जाती है, उसमें एक 10% का इजाफा हो जाता है. And therefore, if DRC 01A has not been issued to you, please take it as one of your grounds that this particular demand has been issued without, and therefore it has vitiated
my very right to save that 10% of penalty if in case the amount, the person wanted to pay that particular amount. Now, the next point which everybody has to remember is show cause notice must be a proper notice and not a communication. Meaning thereby the notice should have all the requisites. I'll further deliberate into the requisites कि क्या क्या उसके parts होने चाहिए. और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, वो केवल एक लेटर के रूप में कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए कि आपका ये टैक्स आपसे रिकवरी की जा रही है और आप ये टैक्स पे कर दीजिए. नहीं सर, इट शुड बी a fair hearing which should be given to the taxpayer, meaning thereby SCN should not be biased. अगर पहले ही आपको लगे show cause notice पढ़ के कि language is very clear that the officer will tomorrow confirm, then I can tell you, my dear friend, in a number of cases, honorable courts have come to the rescue that if a predetermined bias show cause, where it is very clear that the demand will be confirmed, then it is not a fair opportunity given to the taxpayer, and therefore such particular show cause notice is liable to be set aside. It is an illegal show cause notice. Coming on to the next very essential feature of show cause notice is the proper service of show cause notice. A show cause notice which is not served properly, which is not received, it is as good as the entire proceedings are void ab initio. Now, service has been discussed in section 169, where a number of choices, 6 choices, have been given to the department as how to serve: by hand, by speed post, by mail, by making it on common portal, by affixing on door, whatever. Is it to be followed in the same sequence in which it is given? The answer is no. Meaning thereby, department is not supposed to go to point number A first by tendering hand. If he refuses, then by speed post. No, sir. He can choose, the department can choose any of the 6 options given under the act. Please serve the show cause in any manner as you like. But the most important part is it should be served. But then, my dear friend, it comes with a rider. What rider it comes is, along with the section, there is a rule, 142. Now, 142 says that the notice should be uploaded. It should be issued electronically in form GST DRC 01. When the word electronically has been issued, the only choice which remains with the department is through the common portal. Electronically will not mean by use of a computer. Electronically means in a manner which is completely electronic in its functioning, and therefore the court has already, in the decision of Shri Sham Baba Edible Oil versus Chief Commissioner another, Honorable Madhya Pradesh High Court has clearly laid down that this particular mode is the only mode which has been provided in the rule, and therefore the communication of the show cause should be only by way of uploading on the website of the revenue, which is the common portal gst.gov.in. Now, friends, NASIN, which is NASIN is also NASIN is the body which keeps on updating the officers from time to time and issues various booklets, various educational material for the updation, for the knowledge enhancement of the officer. And I can tell you there are very good write-ups which NASIN issue from time to time. One of the very eye-catching this one booklet on the drafting of the SCN was issued by NASIN, where I found these 4 C's which should be there in a show cause notice to make it a effective show cause notice, which can be which will not be void. I would request all the members to please keep on mute. There is some sound which is coming in between, and therefore that actually affects the flow of the discussion. Naveen, please keep total members on mute, please. Yes, sir, I have already done it, but in the middle, someone or the other comes up. Sir, topic बड़ा अच्छा serious issue है, show cause notice. आज तक मैंने किसी भी taxpayer को या professional को show cause देख के खुश होते नहीं देखा. So I think the gravity must be appreciated
I would request all members कि इसमें हम जितना ज्यादा questions पे ध्यान देंगे उतना हमारे लिए दोनों के लिए मतलब the speaker as well as the all the members, we all are learners and we will learn out of it. Sir, 4 C's नासिम ने कहा अगर आपका शो कॉज नोटिस एक वैलिड शो कॉज नोटिस होगा तो आपको ये 4 जो C's हैं ये आपको उसके अंदर देखने हैं. नंबर 1, कॉन्ट्रावेंशन. असेसी ने कौन सा प्रावधान, कौन सा प्रोविजन कॉन्ट्रावीन करा है एक्ट का. नंबर 2, कॉन्सिक्वेंसेस. अगर उसने कॉन्ट्रावीन करा है तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन. इफ देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाई आर यू इशूइंग अ शो कॉज नोटिस? Maybe there is a contravention, but if there are no consequences, why are you issuing a show cause notice? Number 3, charged person. You should be very clear against whom are you issuing the show cause notice. Many a times the department officer, the proper officer, confuses between a partner and a partnership firm. Matter था show cause notice था partnership firm का, issue कर दिया partner. Many a times the private limited and the proprietorship of the one of the directors is often confused. So charging person, the person on whom the show cause is issued, is also to be seen sensitively. In one of the matters before Honorable Allahabad High Court, we raised this plea that this particular show cause notice is issued wrongly on the proprietorship while the matter related to the private limited company in which this person was one of the director, and therefore since the charging person was not correct, entire show cause was set aside by the honorable tribunal. And last, charging paragraph. आप अपने चार्ज को बड़ा क्लियरली लिखिए. ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. अगर आपको सब पता है कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस, चार्ज पर्सन, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फ्रेम योर चार्जिंग पैराग्राफ, then also you have not made out a good show cause notice which will be tomorrow upheld by courts in times to come. I am not going into detail. This is all is available with NASIM website, the entire checklist. Let's not look at from their perspective because we are not here to make a show cause notice. We are here to address a show cause notice. So उसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हम उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे. सर, मैंने अभी आपसे सर्विस की बात करी. अब हम बात करते हैं कि शो कॉज नोटिस आ गया, हमने उसके वेरियस कंपोनेंट्स देखे, हमें और क्या क्या ध्यान रखना है. ऑडियो अल्टरम पार्टम. The biggest principle of natural justice, one should be heard before a verdict is given against him. No one should be condemned unheard. Fair opportunity of being heard should be given. Audio alteram partem. If the opportunity is not proper, let me give you some examples. The show cause notice fails. शो कॉज नोटिस ये नहीं बताता कि किसके सामने आपको ये रिप्लाई सबमिट करना है. जिस ऑफिसर ने इशू करा है जरूरी नहीं है कि उसी ऑफिसर के सामने हियरिंग हो. ये ध्यान रखिएगा. बहुत बारी हम शो कॉज नोटिस में ये नहीं देखते कि हमें शो कॉज नोटिस ये बता रहा है कि नहीं बता रहा कि किसको रिप्लाई करना. अगर नहीं बता रहा then it is a breach of my very principle of natural justice because I am not given a fair opportunity of being heard. मैं किसके सामने अपनी बात रखूं? So if I am not told whom to reply, number 2, where such person will be found. So suppose if it is saying, please reply to Mr. Sharma, additional commissioner. Now it is not the duty of the taxpayer to run around from pillar to post to find one Mr. Sharma who is additional commissioner. The learned officer should be properly given and addressed with full name, respectfully, number 1. Number 2, the officer's room number, officer's building, officer's city, everything should be laid down very clearly in that particular show cause notice. Within what period should I reply? Usually all show cause notices says within 30 days. So within what time frame should I reply should also be mentioned. If it is an open-ended, then it is no bar on the taxpayer when he should reply, and no order can be passed in such cases without giving him a fair opportunity. Number 4, in audio alteram partem only, जब मैं audio alteram partem की बात करता हूँ, fair hearing के लिए मैं एक और point कहता हूँ, आप अपने show cause notice के reply में हमेशा आखिरी में लिखिए, you are requested to grant me a hearing in person
before passing any adverse order. Agar, if you are in agreement, you are passing a favorable order, no need of personal hearing. But in case you are wanting to pass a adverse order, then my humble submission is that that particular officer should give me a opportunity of being heard in person. Meaning thereby वो मेरे को एक personal hearing देगा. पर्सनल हियरिंग का नोटिस भी जो आता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो केवल ऑफिसर के नेम एंड डेजिग्नेशन और उसकी लोकेशन यहां तक सीमित नहीं रहती. उसको ये भी बताना होता है कि कौन सी तारीख को कितने बजे आपको पर्सनल हियरिंग दी जाती है. कई बार मैंने देखा है कई पर्सनल हियरिंग के नोटिस आते हैं जिसमें 5-6 तारीख या 3-4 तारीख मेंशन होती है, ऑन दिस डेट और ऑन दिस डेट और ऑन. सर, दैट इज नॉट अ मल्टीपल डेट्स ऑफ हियरिंग. That is a single date of hearing which has been given to you at your choice. Don't count it as 3 adjournments. No, sir. We have not taken 3 adjournments because you have given me a choice either to appear on this, this or this. I have not sought an adjournment from you. So don't count it as 3 adjournment. It is a 3 or 4 date of choice of the proper officer which has been given to the taxpayer. And then taxpayer can call for the first adjournment. And then another notice for personal hearing will be issued by the proper officer. Number 2, nemo judex in res sua. The authority should be free from bias. मैं इस मैटर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. अगर शो कॉज नोटिस की लैंग्वेज आपको सजेस्ट करती है कि ये शो कॉज नोटिस से ज्यादा कंफर्मेशन ऑफ डिमांड है, then you should raise this plea that this show cause notice is not free from bias. It appears that the officer has already made up its mind. So, for example, the officer will usually use the words like "it appears from the record." Agar usne use kiya "it appears," meaning he still has some doubt, and therefore there is an opportunity. Agar wo ye language na use karke agar likhta hai, "it is clear from the record that the goods sold is taxable at 5%." Sir, not a valid show cause notice, biased show cause notice will be struck down at the first strike of a pen. Why? Sir, it is not giving me a fair opportunity because the officer has already made up his mind to confirm the demand. Nemo judex in causa sua. No one should be a judge in his own cause. The officer adjudicating should not be related to the matter being adjudicated in any manner. Not remotely, not directly. उनके ब्रदर की फैक्ट्री आपका कंपटीशन है, that officer cannot become a adjudicating officer. So there can be a number of instances where if you can show the cause of relation that a adverse or a favorable hearing is an outcome of that relation, the officer cannot pass the order against such particular show cause notice. Proper notice, I have already discussed. Proper hearing and not mere formality. Many a times, the hearing authority, if you have found, they many a times say, do you have to say something more than what you have submitted? Many of us would say, no sir, we don't have to submit and the hearing is over. Sorry. My humble request to every professional brother, my dear friends, even if the authority say, you humbly request the authority that, my dear sir, even though everything is written, I want to present everything in person before you. I want to highlight certain points which are even though written in my submission, but I want to bring it to your notice in person. Why is it so, sir? Number 1, the taxpayer has imposed a lot of faith in us that we are contesting, we are fighting his matter to the best of our capabilities. So if we are given a personal hearing, we should not lose that particular opportunity as a mere formality. Number 2, even though it is written, the manner you will put that particular submission in front of the officer with a firm belief, with a firm commitment, with some stress on some important point, the officer may be able to better appreciate your argument, and the communication may lead to clearing some dilemmas in the minds of the officer, which otherwise, if you would have just got up from the hearing, would not have served.
So if you are given an opportunity of fair hearing, please उस opportunity को मत गवाइए. Please ये विश्वास रखिए, हो सकता है आपकी एक लाइन कहीं ना कहीं उस ऑफिसर के माइंड में एक छोटा सा आइडिया पार्क कर दे कि क्यों आपका टैक्स पेयर सही है और एलिगेशंस गलत. Don't lose the opportunity. Fight for it. It is our right to fight. The affected parties should have right to scrutinize the documentary evidence collected. Already मैं RUDs जब मैंने डिस्कस करे तब मैंने आपको इसके बारे में काफी बताया. सर मैंने 74 के अंदर आपसे कहा था कि जो 3 प्री रिक्विजिट्स हैं 74 की, सप्रेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड, इनके लाइव एग्जाम्पल डिपार्टमेंट को शो कॉज में लिखने पड़ेंगे. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जब ऑडिट का शो कॉज इशू होता है 80% ऑफ द शो कॉज में क्या लिखा होगा, अगर ये ऑडिट हैड दिस ऑडिट बीन नॉट कंडक्टेड द टैक्सपेयर वुड हैव evaded this particular tax as this particular suppression would have never come to the knowledge of the department. मतलब अगर हमने ये ऑडिट नहीं किया होता, हमने ये एंटीवेशन नहीं किया होता, तो पक्की बात है ये जो टैक्स पेयर है ये इस टैक्स को बचाता, ये इसको चोरी कर लेता. सर दैट इज नॉट अ एलिगेशन ऑफ सप्रेशन. You conducted an audit because that was a power given to you under the act, and I have produced all my records to you. If I have a good reason, to produce and submit that, sir, this is because I have not paid a tax on this. So for example, ocean freight. Sir, ocean freight was already, I'm not talking today because Honorable Supreme Court has already held it in the favor of the taxpayer. Many of you who have already gone through that particular decision would appreciate that how sensitively we have won the case in the Honorable Supreme Court at the last mile. Otherwise, the entire case, all the arguments were not appreciated by the apex court. It is the last composite supply issue where the entire matter fell into the favor of the taxpayers. Barring that, जब तक ये फैसला नहीं आया था, अगर उससे पहले कोई शो कॉज नोटिस इशू होता और वो ये कहता कि ओशन फ्रेट में टैक्सपेयर ने टैक्स नहीं पे किया है, even though taxpayer is giving 15 reasons why tax is not applicable, then in that particular case 74 cannot be alleged. So whenever the department is alleging, please look into two things. Number one, डिपार्टमेंट को ये क्लियरली बताना पड़ेगा कि क्या वो फ्रॉड अलेज कर रहा है, क्या वो मिसरिप्रेजेंटेशन अलेज कर रहा है या सप्रेशन अलेज कर रहा है. अगर वो लिख देता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन दैट द टैक्सपेयर हैज नॉट पेड द टैक्स, माय डियर फ्रेंड, जब डिपार्टमेंट को ही नहीं पता इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट टैक्सपेयर ने किया है, दैट पर्टिकुलर नोटिस विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो तीनों में से एक एलिमेंट डिपार्टमेंट को चुनना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को यह भी बताना पड़ेगा कैसे वो एलिमेंट असेसी ने, टैक्सपेयर ने यूज किया टू इवेड द टैक्स. सो लुक इनटू दीस थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज द मोर यू लुक इनटू, द मोर यू थिंक, every element of show cause notice need to be replied back with full force, with full commitment, with full I would say belief. If you do not believe in what you are writing, I can tell you the matter will not hold in the long run. The demand will definitely be confirmed in maybe next authority or in the subsequent authority. These are the limits, powers given under the circular to various authorities when they can issue a show cause notice. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हर ऑफिसर की एक लिमिट है उसकी रैंक के हिसाब से. हायर ऑफिसर नीचे वाले का शो कॉज इशू कर सकता है, नीचे वाला अपनी लिमिट से ऊपर का शो कॉज इशू नहीं कर सकता. मैं क्योंकि I am left not with more than 10 minutes, so I'm just focusing on certain very germane points, very important points. Adjudication, we have already seen show cause notice, what are the different elements, and my dear friends, also please remember show cause notice is the starting of the battle, it is not the end of the battle, right sir?
Why am I saying so? Many of the friends say, if I have received a show cause, sir, almost demand will be confirmed. My dear friend, before show cause, it was only the inquiry. Sorry, it was only the inquiry which was going on. The first time when you are into a battle with the department is the show cause notice only. Before that, it was just a data mining, data gathering, data examination, which was being done by the department. There were no allegations. The allegations have frozen in form of the show cause notice, and therefore show cause notice should not be seen as the end, but the beginning of your real fight in terms of defending your position. I am not a big fan of any litigation. Let me be very clear with you. If you find that there is a demand which is to be paid by your noticee or your taxpayer client, you should convince him to pay and put an end to the litigation. But in case you find no, this demand is not payable by the my taxpayer, please believe, please understand, please write. आपको शोकॉज का रिप्लाई लिखने में बहुत मेहनत लगती है. एक शोकॉज के रिप्लाई में बहुत टाइम और एफर्ट जाता है. And therefore, this does not become attractive to many of the professionals because the kind of quantum of effort and time which it demands from them is not in many cases commensurate with the size of the fees which they are getting. But my dear friend, let me be very clear with you. आपको कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी. और जीएसटी में जैसे शुरू में नितेश जी ने भी कहा, बंका जी ने भी कहा, ये तो एक दौर है जहां पे नोटिसेस बहुत आएंगे. सर, ये वो दौर नहीं रहा जहां पर पहले वैट अथॉरिटी केवल वैट करती थी, सर्विस टैक्स अथॉरिटी केवल सर्विस टैक्स करती थी, एक्साइज करती थी. सर, अब इतनी अथॉरिटीज हो गई हैं और वो सब एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, हाउ टू टेक आउट द टैक्स और हाउ टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द टैक्स पेयर. I'm not using the word legitimate because many a times the demands seems to be wrong. So whether they are right or wrong is a separate issue. What is more important is the government officer will always be pro-revenue. The taxpayer should also be very clear. And as a professional, you should be in a position always to defend and write the reply very clearly. I'll also bring to your notice that the recent GST Council meeting एक बहुत important decision लिया गया. जब power to issue show cause notice has been given to both the center and the state, they have agreed that any of the two can issue the show cause notice, and therefore the proceedings can be taken up by either of them. Now it is very, very important, but it is also reflective of the fact. वो एक और चीज की तरफ इशारा करता है कि क्या ये जो power थी before this decision, was it not there? If it was not there, then this particular pleading of lack of jurisdiction should be taken up before in replying to all show cause notices issued prior to that particular date if it is not issued by the jurisdictional officer. So let us wait for the fine prints of minutes of the meeting, and I can tell you this is one of the points which will help you tomorrow in show cause notice, in appeals, because jurisdiction and limitation can be taken up at any point, at any stage of litigation. Now, adjudication again is a very sensitive matter. Adjudication also has to be undertaken by the proper officer in a systematic manner, in a manner where justice is not only served, but should also be seen as served. So it is a very important aspect of giving justice to anyone that आप केवल एक डिसीजन नहीं देते, आप उस डिसीजन से पहले उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं. आपका ऑर्डर जो है वो एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, आपकी क्रोनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, आपकी लीगल एफर्मेशंस, आपकी कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ प्रोविजंस बड़े क्लियर होने चाहिए, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एक असेसी को बियर करने हैं वो भी आपको अपने ऑर्डर में बड़ी क्लियरली देने चाहिए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, adjudicating order should not be a mere replication of the show cause notice. Order in original should not be a cut copy paste of the show cause notice. It should take into account the submissions
of the taxpayer or the SSC. It should also, where the taxpayer is not in agreement with the allegation, the order should also address that the submission or the objection raised by the taxpayer or the noticee वो कैसे गलत है, and why that particular order goes against the submission of the noticee. So all these things need to be taken care. I'm not saying lengths of paragraphs have to be written, but definitely they should touch on the important aspects, important submissions raised by the taxpayer. Noticee ने जो raise करे हैं important points, उसके ऊपर order में जरूर उसके बारे में बात होनी चाहिए. So adjudication should be proper, reasoned, and not passed in haste. Sir, why this paragraph has become very important, the phrase not passed in haste? For the very simple reason, there is a barrier which has been put by the statute. Statute ने एक limitation रख दी है कि आप कब तक कोई demand order pass कर सकते हैं. 73 का demand order pass हो सकता है from 3 years from the due date of filing of annual return for that financial year. So 17-18 ki, if I am not wrong, it was in 2020 that the annual return due date was there, and therefore 3 years from there, 2023 December will become the due date where the order of demand under 73 can be passed by the proper officer against the taxpayer. And in case of section 74, the time limit is increased from 3 years to 5 years. So many of my friends who are not fully appreciating the difference between 73 and 75 will definitely be appreciating the same from 2024 and onwards. Because if you are able to establish your case within 73, then no demand can be raised for 17, 18, 18, 19 in after 2023. But that will not be the case if your case is falling under section 74. 74 की demand 2025 तक आ सकती है. Yes, उसके बाद it will become time bar. Unlike service tax and excise, where show cause was required to be issued before within the limitation, GST is a more stringent law. It requires the adjudication order in original to be issued before that date. So खाली show cause नहीं sir, order pass होना चाहिए before the time given, and show cause should be at least 3 months before the order it should be given to the taxpayer. So suppose we are talking about December 2023, 31st December 2023 as the last date under 73 when demand can be raised. My dear friend, the show cause can be issued up to 30th of September 2023 for 1780. जिसका show cause नहीं issue हुआ, that particular person will not get a demand under 73 for 1780, and so will go the fate for 74 in 2025. Adjudication beyond show cause notice, not sustainable. Already discussed, already touched upon. Show cause notice को ढंग से threadbare करना इसलिए जरूरी है. एक-एक element check करना पड़ेगा order in original में. The moment you find order in original going beyond show cause notice, that is the point where you will challenge the order in original as unsustainable. Adjudication should be independent application of mind, should not be a cut copy paste. Recording of reason, speaking order is a must. Delay in hearing and passing of order. A long delay in hearing and passing of order will make the entire proceedings infructuous. 10 साल बाद order pass हुआ. In GST it is not possible, but in service tax and excise it was possible. So I think this will be of not much use. But yes, my dear friend, wherever there is an inordinate delay in passing the order, this particular order will not stand true in the court. Pre-consultation before issuance. Now this is again by way of the master circular dated 10th March. It was in the erstwhile era. But my dear friends, if I am talking about DRC 01A, this is because it is a sort of a pre-consultation which is given that, see, this is your demand. If you want to pay, we will not go into the proceedings of SCN. And your section requires that section 73 and 74. It says if the demand is paid by the taxpayer before issuance of show cause notice, entire proceedings will be deemed to be concluded. So, usko jab tak bataya nahi jayega, how will he pay?
Can SCM be quashed by High Court? Yes. SCM can be quashed by High Court in certain cases. And in this particular thing, I would bring to your notice your own very Honorable Calcutta High Court has given a very beautiful decision, a landmark decision, judgment, sorry, in the case of Indian Cardboard Industries Limited versus Collector of Central Excise 1992, 58 ELT 508. The show cause notice can be interfered by the court, Honorable High Court, only in very limited circumstances. And what are they? Number one, when the show cause notice ex facie or on the basis of admitted fact does not disclose the offense alleged to be committed. आपकी गलती क्या है? अगर वही नहीं बताया तो show cause notice बेकार. Number two, show cause notice is without jurisdiction. How can jurisdiction be challenged? Sir, state officer issuing when you are under the central officer or vice versa. Officer issuing beyond his limit. Officer of a different range issuing show cause notice on you. All these are lack of jurisdiction. A number of cases of lack of jurisdiction can come. Officer issuing without authority of law, lack of jurisdiction. Show cause notice suffers from incurable infirmity. Sir, show cause notice issued after 30th September without not between 3 months. Incurable infirmity. Show cause notice not served on the correct person. Incurable infirmity. All these cases, it can again be a subject matter of Article 226 of the Constitution before the Honorable High Court. When show cause notice is contrary to judicial decision or decision of the tribunal, already Supreme Court ने ocean freight में कहा, फिर एक show cause notice demand करने लग जाता है, then the High Court can interfere under the given circumstances. See, again, your skills of litigation in GST, in show cause, a lot of things are required. But looking into the paucity of the time and the time given to me, I am not going into the entire list. But my dear friend, I am just concluding my deliberation with this statement. Show cause notice, reply to a show cause notice is an art. It is not a science. You cannot achieve the desired result by a mechanical manner. You have to understand, read it firmly with complete backing or knowledge of the subject. And thereafter, you should write a reply to show cause notice only if you believe in the reply. If you are not in belief of that reply, I can tell you, you will never come out with a very nice, beautiful reply against that particular show cause notice. So once you are done, last but not the least, post your reply. Do believe in presenting your case before the officer. Do not try to skip the part where you have to even reiterate. आपको पूरा शो कॉज का रिप्लाई क्यों भले उसके सामने, आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है सर. You have to park the points into the minds of the officer. That's sir, my contentions are number 1, 2, 3, 4. And therefore, basis this, I am humbly submitting that the allegations do not have legs to stand. And I can tell you, my dear friends, most of the demands will be gone. They will not stand. It might take first appellate authority or maximum second appellate authority for maximum demands to be taken out if we are in the right side of the law. So with these words, I thank each and every member of Views Exchange CPE Study Circle. I was told by the host that we have to keep 10 minutes to for the question answer session. So I would request now my chairman, Vikas Bankaji. Sir, if you permit, we can take up some questions. Yes, sir. Yes, sir. Why not? Please, sir. Navinji, please take up the Yes, question yes. answer from the. And before we Vikas. start the question answer, I would like to add on over here is, sir, the last date for the issuance of the so-called notice for the financial year 17-18 was, I think it was the 4th or the 6th of the November in case of section 73. Because the last date for the filing of the annual return was the 5th of the 7th of the February 20. February 20.
February So, 20. sir, so PDF बना रहा पटो. so Banka sir, we are left with still lesser time, and I think the difference between 73 and 75 will be Yeah. well appreciated after February 5th and 7th, 2023 by Right. all the learned members for 17. Right. My humble apologies, but the compliance dates I might be misplaced. My Yes, apologies. yes, that's why I have added this section, sir. And for the financial 18-18, it was the 31st December 2020. Right, sir. So 30th December 23 was the 474, 73 for issuance of the notice, and 30th December 25 for the 30th June for the issuance of the notice under section 74, because 74 have the 6 month time and back, and 3 months time for the 73. Right, sir? Perfect, sir. Perfect. I'm not, I never challenge, go into any kinds of discussion on the dates. Bad at it. Right, sir. Thank you, sir. Please, Naveen ji, please take over. Yes. Thank you so much, sir. So we have some questions in the chat box. Vivek ji is asking that in the case of ocean freight, CGST is still insisting for data or information for period April 17 to June 17, even when already submitted in writing about SC decision, and that the period is time barred. Any advice, sir, regarding this? Vivek ji, the problem is that the decision which has come from Honorable Supreme Court was in for the GST period. That is primarily the problem we are facing. But I think the same decision will squarely apply in the case of service tax also, because I don't know why, but department is not appreciating the fact the concept of composite service and bundling of service or bundling of goods and services was very much applicable in those days also. And it is not a rocket science for someone to decipher that the value of ocean freight was forming as equally a part in the earlier times also. So I think we should not resist giving data, but we should definitely put this very clearly, and yes, wait for a suitable point where Honorable Supreme Court will pass a similar verdict for this period as well. So the next question is, what would be the last date for issuing show cause notice for Tran 1 observations or verifications? My dear friend, Tran 1 is no different than event. It is merely a claim of your ITC. So the moment you are making a claim in your ITC, that is during a financial year. So in the financial year, which is obviously 17-18, where you have claimed your Tran 1 credit, the last date of 17-18 would be the last date when the SCM for that Tran 1 event can be taken. So आपने बहुत सारा credit लिया 17-18 में, हर invoice का, हर Tran 1 का अलग-अलग आपको time limit नहीं मिला. 17-18 का पूरा एक time limit है, जो अभी बंका साहब ने बताया, February 5 or 7 of 2023 under 73 and 25 2025 of same dates under 74. Okay, sir. So the next question is from Mr. Chirag. Sir, he's asking that we have filed all the returns for a financial year. We have omitted a few sales, but the due date for annual return has not expired. If the department issues a show cause notice before filing annual return, then can it be termed as a case of fraud? Chiragi, the question is not that you are still in your annual return time is still before you, because annual return is not a form where you can rectify things. It is basically an assimilation of the information filed in 3B. If you look into that particular form, you are not supposed to sort of fill in the correct information there. It is merely if some minor rectifications is required, the department has given you a choice to pay the taxes there, but the right time to pay the taxes, the due time to pay the taxes is your 3B. So when such an allegation has been brought in by the department, the first thing which you should do is you have to find the reason why those sales have been missed. Many a times the Excel sheet taken by the accountant, it misses. Number two, there are items where while uploading, the full data is not uploaded. Number three, there is a error in the accounting itself. Those particular reasons will save you from the fraud. And the very material part, that it is not yet we have audited or reconciled our data.
So it is not the right time that such particular 74 allegation can be taken upon us. So look for the correct reason, look for the correct ground. Annual return is no savior for 74. Thank you, sir. Sir, I have one small question, sir. So the taxpayer had availed excess ITC, and after a few months, he reversed the same and paid interest, and he intimated the same to the proper officer. But the proper officer is now demanding penalty under section 73 subsection 9 read with 7311. But 7311, how can it be attracted in this case? Because it cannot be. It cannot. Yes. And 73(6) has been followed. The officer has to appreciate that there is no unpaid tax which need to be recovered. So 73 proceedings cannot be initiated. So I think the officers are also on the learning side here. We need to keep, Naveenji, we need to keep space. We cannot be perfect. They cannot be perfect. Right? So appreciate that. Give them time. And yes, also share your thoughts. Everybody learns. But don't keep grudges either side. No, sir, but the officer was telling that 7311 says notwithstanding anything contained in subsection 6 and 8. So basically 7311 overrides 6 and 8, and even though the SSC has followed 73(6), I will override it. Let him do, but then when there is no demand which is being demanded, there is no tax which is being demanded, proceedings under 73 cannot be initiated. Only 3 cases proceedings under 73 or 74 can be initiated. A tax is short paid or not paid. Input tax credit is wrongly availed. And number 3, refund which was not eligible has been taken by the SSC. If these 3 instances are not there, there is an error which has been rectified. Let him pass some time of yours. He is only doing his learning part at your cost. That is all. And sir, what is the significance of form DRC 04? Because in very less cases, we have seen that form been passed by the. Naveenji, you had been muted. Okay. Sorry, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि ना DRC 04, sir, is there any time limit? और ये किस cases में pass होना चाहिए? And is it compulsory for the? I highlighted this issue. I have already brought in this particular issue to the knowledge of the member board, CBIC, that the conclusion of the proceedings in many cases are pending. Now that can be in the form of what you're saying. It can also be in the form of ASMT 12, if you understand. In many cases, ASMT 10 has been issued, 11 has been answered, but 12 has not been issued. So I think the conclusions of the proceedings are yet to achieve some kind of a charter where the acceptance of the action of the taxpayer should be acknowledged by the officer. So officers are not doing this as of now. Everybody knows that. But I think we are escalating the matter. You should also escalate the matter through your learned study circle. Everyone, when raises an invoice, definitely it makes an impact. Naveenji, you are muted. Please unmute yourself. Naveenji. So we have some more questions, but I think it is not related to today's topic. Apart from today's subject, I wish to ask regarding GST on petrol and diesel. Is it coming soon? Sir, we can skip this question. So the next question is, SSC has claimed ITC and later knowing that it is not eligible, he reversed the same, but he disputed the chargeability of interest. The officer issued show cause notice for both the ITC and interest. Is this correct, or he should have issued show cause notice only to the interest amount? So obviously interest amount, I think. See, the officer, number one, before I come to the officer, was your case covered under the proviso to 50 subsection 3 or not? You have to also understand and appreciate it is availed and utilized case or availed or utilized case. Sir, the SSC has claimed ITC and later knowing that it is not eligible. Utilization has not been, Naveenji, spoken about in the question. So if you have not utilized, there is no interest. If you have utilized, then what show cause notice will be issued by the officer will be that there is a ITC demand and there is a amount which has been reversed which need to be appropriated
So he will write both. Plus the basic contention of the show cause will be demand of interest, which he will do through that show cause. But he cannot demand without the appropriation of the amount. He cannot demand the ITC again because it has already been paid. So to that extent, you can highlight the anomaly that this particular show cause notice is based on bad facts and need to be rectified. Sir, we have some 2A, 2B questions. Sir, we can skip those questions. And in case if anyone has any question, they can raise their hands and ask the question. Friends, I kept the deliberation because this one deliberation can be extended to n number of live example. In one of the cases, I'll tell you, the officers, they made a search on the premises of the taxpayer. I'll give you another small example. There was a shortfall in the finished goods which was found at the time of search. The officers alleged the clandestine removal without payment of tax on the assessee. The assessee on the very next day brought in the record that the amount of goods which were short found were in the trucks which were outside the premises. However, the invoices which were issued in respect of those particular trucks were not signed by the officer on the date of search, while the previous invoices were duly signed. Even though department had such a strong case of clandestine removal, the problem with the show cause, इसको म्यूट कैसे करेंगे? हो गया ना म्यूट? आवाज आ the problem with the show cause was that the show cause took a value which was fictitious. So the demand which was raised on a fictitious value, even though the case was very good, was struck down by the Honorable Tribunal on the very reason that no demand or no allegation which was baseless can stand against the taxpayer. So Bimal Bhai is also here. Bimal Bhai, a very good evening. Good evening, Gaurav Bhai. So as always, it is such a pleasure to see you. Same here, same here. आपकी स्माइल देखे शाम बिल्कुल और अच्छी हो जाती है। ये आपकी अच्छाई है कि आपको दूसरे की स्माइल अच्छी लगती है। And I am through with my part, and I think it is time that now my chairman will pass on the baton to the next speaker. So I thank each and everyone at the Views Exchange CPE Study Circle for being such a patient and lovely audience. Thank you everyone. Thank you so much. Excellent presentation, Gaurav sir. Gaurav ji, excellent. Thank you, Nitesh ji. आप दिख नहीं रहे sir. Thank you, sir. Sir, मैं spotlight कर देता हूँ. Gaurav ji, it was a wonderful deliberations from your side. It was highly appreciated by the members. And in fact, you have enriched us to the extreme with the limited time being provided to you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, Vikas ji, what do you? Welcome, Bimal sir. Namaskar ji, namaskar. Namaskar sir, namaskar. Now it's time to join with the new speaker, Bimal sir, tax guru, GST guru of India. And now I request Girdhari Sharma ji to introduce Bimal Janji sir from New Delhi. हम बाद में 10 मिनट बाद बात करते हैं. Girdhari ji, please. हाँ सर. Yes, please introduce Bimal Jain sir. अच्छा सर. अच्छा, thank you sir. श्री बिमल जैन जी को कौन नहीं जानता. ही इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता, देन ही शिफ्टेड टू दिल्ली. और दिल्ली में तो आज जीएसटी का कुछ भी आप उठा लो तो पहला नाम इन्हीं का ही आता है, जैन साहब का ही आता है. कहीं भी यूट्यूब चाहिए, कुछ भी जाइए आपको सर, हम लोग समझ में नहीं आता. मैंने कहीं भी कुछ भी जी टाइप करते, जीएसटी टाइप करते, बिमल जैन सर आ जाता है. He is a member of Institute of Chartered Accountant since May 1994.
Institute of Company Secretary since 2006. He is a bachelor degree in law also. He is practicing in direct, indirect, basically indirect taxes. His working experience of more than 18 years in renowned companies, LG Electronics, Honda Motors, what not, all the big companies are client of Sri Jain sir. He has a huge experience on these lines, on these subjects. He is the professional membership of chairman of indirect Chamber of Commerce, committee of group of institutions, association, FICCI, ICI, you name it and he is there. ICI, ACI, members of eminent faculty in direct tax committee of all the institutions. He is keynote speaker in Guinness World Record made by ICSC in largest taxations. He is consultant in all the big fortune companies. With these words, we welcome Sri Bimal Jain sir with the clappings. Thank you, sir. Welcome, Bimal. Welcome, sir. Welcome, sir. स्टार्ट करें. Yes, हाँ, sir. sir. At the outset, let me thank जितने भी मेरे अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, आप सब जुड़े हुए हैं. गौरव भाई को आप सुन भी रहे थे. एंड दिस इज माय अपॉर्चुनिटी. फिर एक टेक्निकल टॉपिक बट हम प्रैक्टिकल करेंगे और एंजॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे. My only submission and request to each one of you would be chat box को एक्टिव रखना है. मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर देखना चाहता हूं. जब भी मैं आपसे पूछूं तो आप आंसर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और वी विल एंजॉय द सेशन टुगेदर. टॉपिक है डिपार्टमेंट आजकल आए दिन स्क्रूटनी नोटिस भेज रहा है हम सबको. मैंने किसी का नाम नहीं लिया बट सभी का नाम मैं इम्प्लाइडली मान लीजिए मैंने ले लिया है. अगर मैंने किसी का क्योंकि सारे प्रोफेशनल मेरे साथी हैं. So with all regards, due regards to each one of you, good evening and let me start my session today. Nowadays we are getting scrutiny notices and frequently we are getting scrutiny notices. आप लोग मेरे से सहमत होंगे, डिपार्टमेंट आज के दिन आए किसी भी मैटर पे आपको स्क्रूटनी नोटिसेस भेज देता है. आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि स्क्रूटनी नोटिसेस आए तो क्यों आएंगे, why they are going to send scrutiny notices, what is the way forward, आपको क्या करना है, what is supposed to be done, and what is the preparation and handling both the things together for such scrutiny notices. Let me start with the very first pointers. आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए. I'm asking you and I'm mixing up हिंदी इंग्लिश क्योंकि कलकत्ता है, हिंदी नहीं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा. तो आप लोग सहमत है ना? I mix हिंदी एंड इंग्लिश चलेगा ना? एक बार चैट बॉक्स में यस आना चाहिए. मुझे ये लगेगा कि आप सब तैयार हैं और वाकई ऐसा चाहते हैं. और चैट बॉक्स आपका एकदम पूरा परफेक्ट फुल रहना चाहिए मेरे साथ. चलिए, यस आप लोगों ने किया, थैंक यू वेरी मच. अभी भी और कंजूसी नहीं करनी है चैट बॉक्स में. दान खाता है, जितना मन आए उतना डालिए. देखिए, दान देने से बढ़ता है, यानी ज्ञान देने से बढ़ता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, फिर कनेक्ट करूंगा. आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन. मैंने अपने GSTR 3B में 15 लाख रुपए की क्रेडिट ले ली. 15 लाख रुपए की. और मेरे GSTR 2A में 10 लाख रुपए आ रहे थे, 10 लाख रुपीज आ रहे थे. 5 लाख का डिफरेंस है, 5 लाख का. अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन, और आप बोलेंगे सर ने आते ही क्वेश्चन करना चालू कर दिया, अभी कुछ बताया नहीं और क्वेश्चन पहले चालू हो गए. पर आप लोगों को आंसर देना है, वही एक्टिव वे है, इसी वजह से हम इसको एंजॉय कर पाएंगे. अब 5 लाख की क्रेडिट आपके 2A में नहीं आ रही. मेरा पहला क्वेश्चन, आपको 15 लाख की क्रेडिट आपने बुक्स में ली, 2A में 10 लाख रुपए है, 5 लाख नहीं आ रहा. क्या आपको ये 5 लाख की क्रेडिट मिल जाएगी? पहला पॉइंट है, मिलेगी या नहीं मिलेगी? से यस एंड नो, यस एंड नो.
तो आंसर क्वाइट ऑब्वियस है, कई लोग यस बोलेंगे, कई लोग नो बोलेंगे, कई लोग कुछ डेट एक भविष्यवाणी करेंगे, तो कईयों ने बताया कि भाई हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। लीगली नो आशीष अग्रवाल जी हैं, उनने कहा लीगली नो। अतुल मेहरोत्रा जी हैं, उनने कहा यस। विजय बल्लभ साहा है, उनने कहा कंफ्यूज। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनना है। आपने कहा क्रेडिट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकता है, कईयों ने कई आंसर दिया। क्या डिपार्टमेंट मुझे स्क्रूटनी नोटिसेस भेज सकता है? तो मैं आपको बताऊं 2017-18 में मोर देन 38,000 स्क्रूटनी नोटिसेस भेजे गए हैं, और वो इस पे ही भेजे गए हैं कि आपके क्रेडिट जो आपने 3B में ली है वो 2A से मैच नहीं करती। अब कुछ हम चीज लीगली डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लीगल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। There are 4 conditions to avail GST credit under section 16 subsection 2. 4 conditions क्या हैं? पहली कंडीशन, आप अगर बायर हैं, रिसिपिएंट हैं, तो आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हो। तीसरी कंडीशन, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। इस पॉइंट पे भी आएंगे। एंड चौथी कंडीशन, एज ए रिसिपिएंट आप रेगुलरली अपना जीएसटी का रिटर्न भर रहे हैं। अब ये चारों कंडीशन में 2A की बात तो कहीं पे भी नहीं आई। पांचवा कंडीशन उन्हें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में ऐड किया। फ्रॉम 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 से उन्हें डाला, और उन्हें कहा कि जो क्रेडिट आप ले रहे हैं 3B में, that must be coming in your GSTR 2B, GSTR 2B। तो लीगली अगर हम देखें तो प्रोविजन में 2A की बात कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं। मान लीजिए आपके पास स्क्रूटनी नोटिस आ गया है और डिपार्टमेंट आपसे कह रहा है, बिमल जी आपने जो 15 लाख रुपए की क्रेडिट ले ली है, एज अगेंस्ट 10 लाख रुपए जो 2A में आ रहा है, आप एक्सप्लेन कीजिए कि 5 लाख की क्रेडिट आपने कैसे ले ली। और वो स्क्रूटनी नोटिस में आपसे क्या बोलता है, विद इन 7 डेज या तो पे कर दीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। टाइम तो उनके हिसाब से है, 7 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 12 दिन, पता नहीं उनको क्या समझ में कैसे आता है, मुझे नहीं मालूम। दैट इज हाउ दे आर डूइंग फ्रॉम देयर साइड। बट अब जब स्क्रूटनी नोटिस आपके पास आ गई और जब वो आपसे बोलते हैं आप इसको रिवर्स कीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेनाल्टी, यानी क्रेडिट को भी रिवर्स मारिए, उस पे इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी दीजिए। तो एक बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, कैन आई रिक्वेस्ट समवन टू म्यूट देमसेल्व्स। पहले आप लोग म्यूट कर लीजिए, आप लोग सभी भी जो पैनलिस्ट हैं वो भी म्यूट करें अपने आप को। ऑल पैनलिस्ट मस्ट म्यूट देमसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और क्या मेरा से है आप सबसे। मान लीजिए मैं सप्लायर हूं दिल्ली से एंड मैं वेस्ट बंगाल में सप्लाई कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन इज IGST। ट्रांजैक्शन इज IGST। अब मान लीजिए मैं जब अपना GSTR1, सप्लायर अपना GSTR1 भर रहा है, उसने आपका GST नंबर, बायर का, रिसिपिएंट का GST नंबर करेक्टली फर्निश नहीं किया अपने GSTR1 में, तो आपके 2A में आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन प्लीज बताइए, आपके 2A में आएगा या नहीं आएगा? से यस एंड नो इन चैट बॉक्स। आएगा या नहीं आएगा? आपके 2A में नहीं आएगा, नहीं आएगा।
B2B सप्लाई थी, रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, बट मैंने B2C दिखा दी। अब आपके 2A में आएगा क्या? आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन, आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई थी, इंटरस्टेट, पर मैंने इंट्रा दिखा दी। गलती हो गई मेरे से, सप्लायर से मिस्टेक हो गई, उसने इंट्रा दिखा दिया। आपके 2A में दिखेगा क्या? आई एम आस्किंग, कस्टमर ऑफ कैलकाटा दिखेगा क्या उसके 2A में? सर दिखेगा, बट वो इनएलिजिबल कह देगा। प्लेस ऑफ सप्लाई वो दिल्ली दिखा देगा, आपको क्रेडिट फ्लो नहीं करेगा वो। चौथी सिचुएशन, मान लीजिए मैंने GSTR 3 भी भरा है, सप्लायर ने GSTR 3 भी भरा है, पर GSTR 1 नहीं भरा। आपके 2A में आएगा क्या? प्लीज टेल मी, आपके 2A में आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमको खोजना है। मेरी बुक्स में 15 लाख रुपए की क्रेडिट है और 2A में आ रहा है 10 लाख रुपए, और मेरे पास स्क्रूटनी नोटिस आ गई है। अब मुझे जस्टिफाई करना है कि मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला लीगल पॉइंट हम लेते हैं। लीगल पॉइंट क्या कहता है कि आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए जो है, आपने गुड्स रिसीव होने चाहिए जो आपने रिसीव कर लिए हैं, आपके सप्लायर ने 3B भरा है, बट मे बी GSTR 1 भरते वक्त उससे गलती हो गई, रॉन्ग GST नंबर, B2B B2C में दिखा दिया, इंटर को इंट्रा दिखा दिया, या 1 उसने भरा ही नहीं, 3B भरा, तो टैक्स का पेमेंट तो हुआ है। एंड बीइंग रिसिपिएंट आप अपना रेगुलरली GST रिटर्न भी भर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही क्वेश्चन था। 100% मिलेगी क्रेडिट, 100% मिलेगी। लॉ वाइज दे कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू यू। पहले इस बात को मैं आपको बता दूं, लॉ वाइज दे कांट से नो, कांट से नो। यस, फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से 5वीं कंडीशन डाली गई कि क्रेडिट आपके GSTR 2B में आनी चाहिए। तो यानी अगर प्रायर टू 1 जनवरी 2022 है तो मेरी क्रेडिट in the hands of buyer and recipient is not dependent on GSTR 2A। फर्स्ट पार्ट हमने ये कंक्लूड किया। दूसरा पार्ट, यस, फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से मुझे 2B देखना है, तो इसके भी 2 एस्पेक्ट में करूंगा, पर इसको थोड़ी देर के लिए पार्क कर लेते हैं। मैं प्रायर टू 1 जनवरी 2022, विकास जी बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, बंका जी, और उसने स्माइल भी दे दी मेरे को, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत स्माइल दे रहे होंगे। आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद करेंगे। पंकज जी आप मेरे साथ चलो, आज 1.5 घंटे ना अपन एंजॉय करने वाले हैं। मूवी देखने जाते हैं ना हम लोग, मूवी में जैसे एंजॉय कर, ये जो पैनलिस्ट हैं भैया, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने आप को म्यूट कर ले। ओनली क्रिएटिंग, म्यूट कर दो नवीन, टोटली म्यूट कर दो सब। हाँ सर, मैं सबको कर रहा हूँ, एक्चुअली बार बार कर रहा हूँ। और विमल सर, मैं स्टार्ट करूं? या अब आप ध्यान रखिए। तो मैंने कहा 1 जनवरी 2022 से GSTR 2B आपको देखना है। पहले मैं 2B की बात करूं, एक पॉइंट पे और डिस्कशन कर लूं आपके साथ। देखिए, प्रायर टू 1 जनवरी 2022 एक रूल होता था, रूल 36 सब रूल 4, अगर आप लोग को याद आ रहा हो, जो 9 अक्टूबर 2019 से आया। उस रूल में क्या था? वो रूल कहता था, बिमल, जो 5 लाख रुपए की क्रेडिट तेरे 2A में नहीं आ रही, द क्रेडिट विच इज नॉट कमिंग इन 2A, you would be allowed a certain percentage of eligible credit coming in 2A pertaining to that 5 lakh rupees। सिंपल लैंग्वेज में, जो 5 लाख की क्रेडिट आपके 2A में नहीं आ रही है, उसने कहा, बिमल, हम एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो 20% से स्टार्ट हुआ, 20% से, तो आपका टेस्ट लेने वाला हूं मैं, आप सबको मुझे आंसर देना है।
उसने कहा 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट कमिंग इन 2A, यानी 5 लाख के लिए एट मोस्ट आप 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट कमिंग इन 2A आपको वो मिलेगी। 20% 10% पे रिड्यूस हुआ 1 जनवरी 2020, 5% पे रिड्यूस हुआ फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो अगर 5% का प्रोविजन हम मान लें और मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन को कि 5 लाख जो क्रेडिट नहीं आ रही 2A में, उस अकाउंट पे मुझे रूल 36 सब रूल 4 के हिसाब से कितनी क्रेडिट मिलेगी? आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, फटाफट आना चाहिए आपका आंसर, जैसे मुझे ये लगे कि आप मेरी बात सब समझ रहे हैं। 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट कमिंग इन 2A, 2A में कितनी आ रही है? 10 लाख। 5% कितना हुआ? 50,000 रुपए, 50,000 रुपए पर्टेनिंग टू 5 लाख आपको मिलेगी, रूल 36 सब रूल 4 कहता था। तो जिन ने गलत आंसर दिया वो करेक्ट करें, और जिनने सही आंसर दिया अप्रिशिएट करें अपने आप को। तो अब हमने ये प्रोविजन समझ लिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, स्टिल आई एम टेलिंग यू माय क्रेडिट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन GST or 2A, नॉट डिपेंडेंट। अब मैं एक आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अब बताइए इस चीज को समझाने के लिए स्क्रूटनी नोटिस की आपको रिप्लाई बनानी है, आपको कितनी चीजें देखनी पड़ेंगी, राइट? एक एक करके मैंने आपको समझाया। पहले आप प्रोविजन बताएंगे कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के मैं चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता था, मुझे क्रेडिट मिलेगी। इवन दो रूल 36 सब रूल 4 भी बोलता था कि अगर टोटल क्रेडिट नहीं भी आती है तो भी परसेंटेज ऑफ क्रेडिट मुझे मिलेगी। और प्रायर टू 9th of October 2019, जब रूल 36 सब रूल 4 नहीं था, तब तो कोई परसेंटेज की बात भी नहीं थी। पर मैंने कहा 2A डिपेंडेंट है ही नहीं है। बट अब मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, भारतीय एयरटेल का जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और वो 2A के लिए डिस्कस कर रहा हूं, सोचिए GST की 5 साल हुए हैं, पर कितने ड्रामा और लिटिगेशन। पहले भारतीय एयरटेल का जजमेंट क्या था, पहले मैं ये बताता हूं आपको। भारतीय एयरटेल ने जुलाई 17 से लेके सितंबर 17 तक जब अपना रिटर्न भरा तो तब 2A नहीं आता था, GST या 2A नहीं आया था। GST या 2A आया ही समटाइम इन 2019, बिगनिंग ऑफ 2019। तो उन्हें नहीं मालूम था कि उनके पास कितनी क्रेडिट है। उन्हें क्या किया, अपने आउटपुट टैक्स का जो पेमेंट करना था कैश के जरिए किया। और कितना किया मालूम है? 930 करोड़ रुपए। बंका जी 930 करोड़ रुपए, छोटे मोटे रुपए की बात नहीं कर रहा। जब GST या 2A आया तो उन्होंने देखा, अरे हमारे पास तो सफिशिएंट क्रेडिट थी। जुलाई 17 से लेके सितंबर 17 में हमारे पास तो इनफ क्रेडिट थी, हम तो ये क्रेडिट से पे कर सकते थे, हमने कैश से गलत पे किया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट डाली, दिल्ली हाई कोर्ट में रिट डाली। उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, वी शुड बी अलाउड टू अमेंड आवर GST 3B and we should be allowed to amend on the pretext whatever we have paid through cash should be allowed to be adjusted through credit account, क्रेडिट से एडजस्ट हो जाए। क्योंकि हमारे पास क्रेडिट थी और हम क्रेडिट से पे इसलिए नहीं कर पाए कि 2A नहीं था, 2A नहीं था, इसलिए हमने कैश से पे कर दिया। तो कोर्ट ने पूछा 2A क्यों नहीं था? उन्होंने कहा, सर इनको लाना था जुलाई 17 से, इनको लाना था, समझ गए था, ये लेके नहीं आए, तो मुझे तो मालूम ही नहीं मेरी क्रेडिट कितनी है, तो हमने कैश से पे कर दिया। अब जब मेरे पास उस पीरियड में जुलाई 17 से सितंबर 17 में क्रेडिट थी, तो मुझे क्रेडिट से एडजस्ट करने दीजिए और जो मैंने कैश में पे किया है उसका रिफंड दे दीजिए, 930 करोड़ रुपए का। दिल्ली हाई कोर्ट ने बात मान ली, उन्होंने कहा ठीक है, आप ले लो 930 करोड़ रुपए का रिफंड। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। GST में सारा काम आजकल इतना फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ना, क्या करें और क्या ना करें। सुप्रीम कोर्ट में जब ये आर्गुमेंट लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें इंपॉर्टेंटली कही, और ध्यान से सुनिए क्या कही। पहली बात, GST सेल्फ असेसमेंट टैक्स है,
यानी आप खुद एनालाइज कीजिए और जो आपको एलिजिबल है वो लीजिए, कोई मना नहीं करता आपसे, और अपना टैक्स पे कीजिए, चाहे क्रेडिट से पे कीजिए चाहे कैश से पे कीजिए। दैट्स व्हाट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। अब मैटर आया कि सर टू वे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिमल जी, टू वे वाज ओनली फैसिलिटेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, उन्होंने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द केस ऑफ भारती एयरटेल ओनली ए फैसिलिटेशन। आपको टू वे पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं था। टू वे कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये तो फैसिलिटेशन था, आपको क्रेडिट ले लेनी थी अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, 38,000 स्क्रूटनी नोटिसेस, राइट, 38,000 स्क्रूटनी नोटिसेस, और टू वे के लिए मिसमैच, टू वे के लिए मिसमैच। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलता है टू वे इज ओनली फैसिलिटेशन, तो इसका मतलब हमारी बात प्रूव हो गई ना कि माय क्रेडिट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जीएसटी आर टू ए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप अपने रिप्लाई में साइट कर सकते हैं। अब मुझे आप लोग चैट बॉक्स में यहाँ पे बताइए, यहां तक वट एवर आई डिस्कस्ड आपकी समझ में आ गया? सही यस एक बार चैट बॉक्स में कि सर हाँ कंप्लीटली समझ में आ गया, मतलब कोई इफ एंड बट्स आपके माइंड में नहीं है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो जब इतने सारे लोग एक साथ यस करते हैं तो मेरी भी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। एक मिनट विकास भाई आपका क्वेश्चन लूंगा, पर एक बार मुझे कंक्लूजन तक पहुंचने दीजिए। और आज हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक मतलब पिक्चर खत्म नहीं होगी। और मैं तो बोलता हूं ना, हमारी जीएसटी की लर्निंग तभी संभव है जब हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। अब इनने कह दिया विकास भाई 1 जनवरी 2022 से अब आपको क्रेडिट 2B में देखनी पड़ेगी, कह दिया ना। पर मेरा से अब सुन लीजिए, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि 2B में आ रहा है बट फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। 2B में आ रहा है बट फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। आपको मालूम है कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास कि 2B में दिख रहा है बट फिर भी क्रेडिट नहीं मिलेगी? सो यानी 2B में दिख रहा है तो क्रेडिट ले लूं, गलत। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि आपके 2B में दिखेगा फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। There's one मिस्टर श्रीनिवासन, कई लोग हैं, अंकित सेठी हैं, उनने भी कहा। एक एग्जाम्पल गुड्स का लेते हैं। आज कितनी तारीख है? 24, वी आर ऑन 28 ऑफ जून। मैंने दिल्ली से माल सप्लाई किया, मैंने इनवॉइस रेज कर दी विकास भाई, मैंने अपने जीएसटी R1 में भी चढ़ा दिया, चढ़ाते ही आपके 2B में आ गया जून के महीने में। बट आपको माल मिला 5 जुलाई को आपको माल कब मिला? 5 जुलाई को। तो क्या जून में आप क्रेडिट ले लेंगे? से यस एंड नो? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी 2B में आ रहा है और मैं क्रेडिट ले लूंगा आंख बंद करके? नहीं सर, नहीं सर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 2B में नहीं आ रहा बट फिर भी मुझे क्रेडिट मिलेगी। 2B में नहीं आ रहा बट फिर भी मुझे क्रेडिट मिलेगी। बताइए क्या एग्जाम्पल हो सकता है? RCM, रिवर्स चार्ज मेथड, 2B में नहीं आ रहा। एंड कीर्ति जेना है, सी गिव द आंसर। रणतीत कुमार है। So I'm reading some name in chat box also. आप एक्टिव रहेंगे थोड़ा बहुत, आपका नाम भी पढ़ूंगा। I just want you should be active. RCM की क्रेडिट 2B में नहीं आती जब आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया। तो यानी वो क्रेडिट 2B में नहीं आ रही है बट फिर भी आपको क्रेडिट मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। इंपोर्ट, ठीक है विकास जी आपकी बात समझ गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायर टू 1 जनवरी 2022 मैंने भी आर्गुमेंट लिए थे ना कि सप्लायर ने रॉन्ग जीएसटी नंबर चढ़ा दिया, B2B B2C में दिखा दिया, इंटर को इंट्रा दिखा दिया, 3B भरा बट 1 नहीं भरा जो आपके 2A में नहीं आ रहा था। पोस्ट 1 जनवरी 2022
सप्लायर ने फिर गलती कर दी, जीएसटी नंबर गलत चढ़ा दिया, B2B B2C दिखा दिया, इंटर को इंट्रा दिखा दिया, 1 भरा ही नहीं उसने, 3B भरा है। अब आपको क्रेडिट मिलेगी, आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, क्रेडिट मिलेगी क्या, हाँ या ना, यस और नो, प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो। सर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। फ्रॉम 1st January 2022 योर सप्लायर मस्ट बी टैक्स कॉम्प्लायंट। अगर उसने गलती कर दी है तो आपको इमीडिएटली उससे अमेंड करवाना पड़ेगा। प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। So now that credit is dependent on supplier and you must know your supplier. That is the way forward from 1st January 2022. तो यानी मैंने एक आपको स्क्रूटनी नोटिस भेजी, मैंने कहा कि आपकी क्रेडिट 2A से मैच नहीं होती तो आप आंसर कैसे करेंगे। आंसर नंबर 1, पहले लॉ का प्रोविजन। I did not get time to hear Gaurav bhai today, but I'm sure Gaurav bhai ने आपको बताया होगा how to reply so-called notices. And this how to reply scrutiny notices are also similar on those lines. पहले लॉ की पोजीशन को डालिए कि लॉ की पोजीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्या थी, फिर आप एक्सप्लेन कीजिए कि 2A तो कहीं था ही नहीं, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 2A। एंड मैं आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट बाल्को लिमिटेड, उसमें नोटिस इशू कर दी गई कि आपके 2A से मैच नहीं कर रहा, रिकवरी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, 2A पे नॉट डिपेंडेंट। और मैंने अब आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया, भारतीय एयरटेल 2A वाज ओनली फैसिलिटेशन। मे बी इस वजह से 930 करोड़ का रिफंड भारतीय एयरटेल को नहीं मिला, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीएसटी इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स, 2A वाज ओनली फैसिलिटेशन। हेंस जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 2A इज ओनली फैसिलिटेशन, तो मेरी क्रेडिट 2A पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा डोंट पे 100%। अगर आपको लिटिगेशन लेना है, टेक ऑन द लिटिगेशन, और आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं होने वाला। आई एम गिविंग यू द गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। तो मैंने आपको स्टार्ट किया और आज 13 रिस्क पैरामीटर हैं, 13 रिस्क पैरामीटर। डिपार्टमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 dated 22nd March 2022। विकास भाई डिपार्टमेंट ने कहा वो कब आपकी स्क्रूटनी नोटिसेस भेज सकते हैं। 13 रिस्क पैरामीटर, 13 रिस्क पैरामीटर। अब एक एक रिस्क पैरामीटर मैं करूंगा तो 4-5 घंटे लगेंगे, बट मैं जितना भी करूंगा मजे से करूंगा, अच्छे से करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। तो एक पैरामीटर डिपार्टमेंट इस पे भी आपको स्क्रूटनी नोटिसेस भेज सकता है, पर आपको घबराना नहीं है। और मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। स्क्रूटनी नोटिसेस किस में आते हैं? सेक्शन 61 रेड विथ रूल 99 ऑफ सीजीएसटी रूल। यहां थोड़ा पॉज करता हूं, यहां थोड़ा पॉज करता हूं, और विकास भाई मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, तो विकास भाई से बोलता हूं। विकास भाई पूछिए, आपके माइंड में क्या आया था? I have 2 questions in my mind. Yes, please. Bharti Airtel has not claimed ITC to the tune of 930 crores and they have paid the in cash. That same entry was whether they have not made their books of accounts as per their on receipt of the goods or receipt of the service. Since credit was available in their books of accounts, why they have not claimed the ITC on the basis of books of accounts? Where the entire country has claimed ITC on the basis of their books of accounts. Because by the very first year of GST introduction, we were all struggling with, and within the GST law, there the provision exists that for particular financial year, if any credit belong to a particular financial year, you can take credit in subsequent period, subsequent. So this is normal time period is April to September, right? But for 17-18, it was last date 31st March 2019.
31st March 2019. So as per GST law, they were permitted to take the credit of 17-18 until 31st March 2019. Now the question which you are asking, you are asking from accounting principle perspective. Yes, sir. So whatever might be, they may have kept that amount in suspense, and they So have this not. is my question, sir. This is my question. So when the entire country has claimed ITC on the basis of their books of accounts, ignoring GST at 2A, since there was no GST at 2 in that time, because it is not the case. Let me tell you. Yes, sir. You will find a lot of taxpayer who has not availed the credit for number of region, either or region. Okay. Of 17-18. So it is not right in saying so that entire country has taken credit of 17-18 in 17-18. Even today, you will find that lot of us has not taken credit of 17-18 as on date. Even we are struggling with RCM credit of 17-18, whether available or not. Lot many question we can ask and give the answer. But I'm giving the theme only. Yes, sir. Objective was giving the theme to you. The 2A was only facilitation, not dependent. So participants tell me, am I clear to all? Because जी ने counter करने की कोशिश की, department के lawyer बन गए थे वो थोड़ी देर के लिए. On a lighter note. On a lighter note. Sir, I have a second query in respect of this also. Yes, please. Today I have seen in CNBC news that GST at 3B can be amended onwards. Whether this will change the judgment of Supreme Court? See, if GST at 3B can be amended, you have to really understand whether with retrospective date or prospective date. Yes. Quite obvious, 99.99% it would be prospective date. Yes. And this is judgment pertaining to the past period. Right. I'm asking all of you, my participants, you give the answer. If it is allowed that GST 3B can be amended, and which is quite obvious from a prospective date, can it change the judgment of Supreme Court for the past period? Say yes and no. No. Quite obvious, no. Right, so I'm not giving the answer. My all friends are giving answer in chat box. Can't be possible. Hope clear? Yes, sir. Yes, sir. So let me now come back to the next part of theme. Section 61 is an important section. और आपको मालूम है, मैं आज सबसे अच्छी चीज बताऊं, मैं आप लोगों को सबसे अच्छी चीज दूं आज. स्क्रूटनी नोटिसेस के लिए आपको बस 2 लीगल प्रोविजन देखने हैं. सेक्शन 61 ऑफ CGST एक्ट एंड रूल 99 ऑफ CGST रूल्स. क्या बोलता है? Any proper officer, and proper officer can be superintendent, jurisdictional superintendent of your jurisdiction. He can scrutinize the GST return. और वो scrutiny क्यों करेगा? To verify and check कि आपने जो GST रिटर्न में भरा है वो करेक्ट है या नहीं है. कहीं आपने ऐसा तो नहीं है कि करेक्ट नहीं भरा है जिसकी वजह से आपके ऊपर लायबिलिटी आती है. एंड लायबिलिटी कैन बी 2 काउंट. आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर भी हो सकती है और ITC के ऊपर भी हो सकती है. तो वो आपको एक नोटिस भेजेगा. जैसे ही उसको डिस्क्रिपेंसी समझ में आएगी कि भाई यहाँ कमी रह गई, वो आपको एक नोटिस भेजेगा. नोटिस का फॉर्म क्या है बताइए? जितने लोग मेरे GST के मेरे फ्रेंड्स हैं, कौन सा फॉर्म है जिसमें वो नोटिस डिस्क्रिपेंसी नोटिस भेजेगा? ASMT 10. आकाश, रुचि, सबने कहा वेरी गुड. यानी आप सोचिए मेरे इतने साथी इतनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं. ASMT 10. Am I right? और कितना टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा फॉर रिप्लाइंग द सेम? कितना टाइम पीरियड एज पर लॉ बताना है आपको. Section 61 read with rule 99. How much time period? 30 days. Very well. 30 days. यानी जब ASMT 10 आएगा 30 दिन का टाइम या further extended time period as permitted by him. Word used 30 days
और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, यानी उसकी इच्छा के ऊपर है कि वो आपको एक्सटेंडेड टाइम भी दे सकता है। तो कई बार आपको अगर दिक्कत हो, आपको लगे कि आप 30 दिन में नहीं दे पा रहे, यू कैन पुट योर रिक्वेस्ट, सर काइंडली अलाउ मी लिटिल एक्सटेंडेड टाइम पीरियड एंड टेक हिज परमिशन। सो मैंने आपको ये बता दिया। अब आप किस में रिप्लाई करेंगे? ASMT 10 आ गया आपके पास। अब आप लोग मुझे बताइए, किस में आप रिप्लाई करेंगे? प्लीज किस में रिप्लाई करेंगे? ASMT 10 11। सो 11 डाल दिया है आपने, अच्छी बात की। आप रिप्लाई करेंगे ASMT 11 में, और ये प्रोसेस है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब आप रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई दो तरीके से, या तो आप उनकी बात से सहमत नहीं है, डिपार्टमेंट की बात से सहमत नहीं है, या आप डिपार्टमेंट की बात से सहमत हैं। If you are agreeing that discrepancy exists, then you must pay tax, interest. Penalty के लिए मैं आपको पहुंच करूंगा. I will not ask you to pay the penalty, because I will not treat that transaction as a item of section 74. मैं उसको 74 का आइटम नहीं मानता है। 74 is fraud, collusion, suppression. Let me tell you, जिसको मैंने GST रिटर्न में भरा, गलती हो गई, डिस्क्रिपेंसी है, मैं टैक्स देने को तैयार हूं, इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, बट इट्स नॉट ए मैटर ऑफ फ्रॉड, कल्यूजन, सप्रेशन, क्योंकि रिटर्न में मैंने डाला है। देयर इज नो इंटेंशन टू इवेड टैक्सेस, हेंस कंक्लूजन इज 74 का मैटर नहीं है। बट ये हमेशा आपसे कहते हैं 15% पेनाल्टी 74 की भरो, हमेशा बोलते हैं, बट आप पेनाल्टी नहीं भरेंगे। नेक्स्ट पार्ट, आपने कहा नहीं मैं तो एग्री नहीं कर रहा, आपने अपनी एक्सप्लेनेशन डाल दी। ना प्रॉपर ऑफिसर हैज टू आइदर एग्री कि आपने जो एक्सप्लेनेशन डाला वो सही है या नहीं है। अगर वो आपके आंसर से सहमत है तो वो आपको एक ऑर्डर इश्यू करेगा। किसमें ऑर्डर इश्यू करेगा? प्लीज टेल मी, किसमें ऑर्डर इश्यू करेगा? शुभम अग्रवाल, ASMT 12 एंड विद इन व्हाट पीरियड? कई बार हम रिप्लाई तो कर देते हैं, बट उसका कोई भी हमारे पास आंसर नहीं आता, नथिंग। आप बताइए लीगली वो ASMT 12 में तो करेगा, आपने कह दिया, शुभम ने भी कह दिया, बट व्हाट इज द टाइम पीरियड? किस टाइम पीरियड में उसको ASMT 12 इश्यू करना है? प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम पीरियड। से आई एम लुकिंग फॉर द आंसर इन अ चैट बॉक्स, मुझे आपका आंसर चाहिए। अनुज ने कहा 7 days, अनिल चौरसिया ने कहा नथिंग स्पेसिफाइड। और भी कोई आंसर डालना चाहता हो? सुमन जी कहती हैं 90 days, आयुष कहते हैं 1 month। आंसर इज, ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया ना, इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022 डेटेड 22 March 2022, इस इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है विद इन 30 days, विद इन 30 days। तो अगर आपके पास नहीं आए ना तो इंस्ट्रक्शन लेके पहुंच जाइएगा, सर प्लीज सर देखिए इंस्ट्रक्शन है 30 days, सो दैट इज द आंसर। लेकिन कई बार मान लीजिए आपने ASMT 10 आ गया आपके पास, डिस्क्रिपेंसी स्क्रूटनी नोटिस आ गई आपके पास, आपने रिप्लाई ही नहीं किया। ASMT 11 में आप शांति से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे आप, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं मैं। तो आकाश पूछते हैं इज इट एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफिसर ऑल्सो? आकाश प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जो सेंट्रल के इंस्ट्रक्शन है ना, स्टेट को भी वैसे ही इंस्ट्रक्शन इशू करने चाहिए, तभी ये 1 nation 1 tax बनेगा। सेंटर तो अपने ले आता है इंस्ट्रक्शन, पर स्टेट फॉलो नहीं करते, एंड पीसमील मैनर, कई बार कोई स्टेट फॉलो कर देता है, कई बार कोई स्टेट फॉलो नहीं करता। माय ओनली सबमिशन टू GST काउंसिल वुड बी, जो आज और कल मीटिंग हो रही है,
कि सर आपने वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की बात कही, आप कम से कम इंस्ट्रक्शन जो आते हैं उनको तो आप पार लेवल पे ले आइए कि जो सेंटर इशू करे वो स्टेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, और वैसे वर्सा, क्योंकि हम जीएसटी लॉ की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं। तो अब मैं जिस क्वेश्चन पे था उस पे आता हूं। आपने रिप्लाई नहीं किया और इसका आंसर में मुझे देखना है चैट बॉक्स में। विकास भाई आपको भी ये वाला क्वेश्चन है। ASMT 10 आपके पास आ गया, स्क्रूटनी नोटिस। अब आपने रिप्लाई ही नहीं किया, आप शांति से बैठ गए। तो आप बताइए डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में क्या कर सकता है? प्लीज टेल मी व्हाट दे कैन डू। प्लीज आई एम लुकिंग फॉर द आंसर। चैट बॉक्स में भी मुझे पूछना है आपसे, और मैंने विकास जी से भी पूछा, तो आप लोग खुल के आंसर जो मन में आए। नहीं आता तो भी एक बार कोशिश तो कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं आपको बता दूं, और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है आफ्टर 45 days from ASMT 10, department will initiate the action under section 73 or 74 for issuance of so-called notice. Otherwise, department can also initiate action under section 65. वो प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी ऑडिट कमिश्नरेट के पास मैटर भेज देगा और बोलेगा इनकी ऑडिट करो। सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, जो क्रेडिट और वैल्यूएशन के ऊपर होती है। When you have excess avail the credit, your valuation is not correct. Section 67 inspection search and seizure, यानी वो एंटी इवेजन डिपार्टमेंट को मैसेज भेज देगा, भैया ये रिप्लाई नहीं कर रहा, इसके यहाँ जाके इंस्पेक्शन और सर्च करो। सो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 45 days एट मोस्ट। सो यू हैव टू बी रियली टेकिंग द एक्शन। नहीं रिप्लाई दे पा रहे, एक्सटेंडेड टाइम ले लीजिए, बट साइलेंट मत बैठिए। You must write a letter to the proper officer to get some extended time period. और extended time period के लिए कुछ नहीं कहा कि 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन, पर कन्वीनियंस आप प्रॉपर ऑफिसर को जैसे मनवा लें। अब इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। Am I clear to all? Tell me in the chat box कि सर क्लियर है, परफेक्ट, कोई डाउट नहीं रहा। आप लोग चैट बॉक्स में यस कीजिए एक बार, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने मेरी बात समझ ली है। वेरी वेल डन, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैंने आपको जीएसटी लॉ में क्या प्रोविजन है ये मैंने बता दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है विकास भाई, इसमें 13 रिस्क पैरामीटर है, और रिस्क पैरामीटर क्या क्या है मालूम है, और कैसे आपको देखने हैं मालूम है। हमारे दो पिलर होते हैं, आउटवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी, दो ही पैरामीटर होते हैं। आउटवर्ड सप्लाई मेरा GSTR 1, देन कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्सेस GSTR 3B में हम दिखाते हैं और पे करते हैं, एंड GSTR 3B में हम क्रेडिट लेते हैं। वी टेक द हेल्प ऑफ 2A और 2B, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो मैं दोनों पैरामीटर पे आपके साथ कुछ केस स्टडी करूंगा, लिसन वेरी केयरफुली। उन्हें एक आउटवर्ड सप्लाई पे रिस्क पैरामीटर क्या दिया मालूम है विकास भाई? उन्हें कहा विमल, जो आपने GSTR 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, तो आपने आउटपुट टैक्स डिटरमाइन किया होगा। तो थोड़ा सा रिकैप करें क्विकली, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने लोग जीएसटी करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बट GSTR 1 में हम मेनली अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन हम GSTR 3B में दिखाते हैं। तो मान लीजिए GSTR 1 में टेबल 4 जो आपका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज की बात करता है, टेबल 5 जो आपकी B2C
टेबल 4 में B2B आती है, टेबल 5 में B2C इंटरस्टेट वे इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख ऐसे करके आती है। तो मैं एक एक हर टेबल की बात नहीं कर रहा, बट मान लीजिए GSTR 1 में आपने 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी दिखाई, 10 लाख रुपीज, 10 लाख की। अब GSTR 3B में टेबल 31A एंड 31B, 31A बोलता है आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज और टेबल 31B बोलता है जीरो रेटेड ऑफ GSTR 3B। और जीरो रेटेड आपके दो तरीके से होते हैं, विद पेमेंट ऑफ IGST, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। एक टेस्ट लेना है मुझे आप लोगों का, सबका टेस्ट लेना है और आप तैयार रहने चाहिए टेस्ट के लिए। मान लीजिए जीरो रेटेड है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हम मान लेते हैं 2 लाख रुपए की है हमारी, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हम GSTR 1 में दिखाते हैं क्या? टेबल 6 में से यस एंड नो प्लीज मुझे बताइए, दिखाते हैं क्या? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाते हैं क्या? यस हम दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। अब इसी ट्रांजैक्शन को मुझे GSTR 3B टेबल 31B में दिखाना है, तो क्या मैं दिखाऊंगा? से यस एंड नो दिखाऊंगा क्या? प्लीज से बिल्कुल दिखाऊंगा, सिर्फ टैक्स का कंपोनेंट नहीं आएगा। विकास भाई बिल्कुल दिखाएंगे, सिर्फ टैक्स का कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। और यही अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स होता तो टैक्स का कंपोनेंट आ जाता। तो यानी अगर 10 लाख रुपए आपने GSTR 1 में दिखाया है तो आपके GSTR 3B में जो टैक्स की लायबिलिटी होनी चाहिए वो 10 लाख रुपए विकास भाई होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। आप सब यस कहते हैं ना। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके साथ करना है। मान लीजिए GSTR 1 भरते वक्त गलती हो गई हमसे, लायबिलिटी तो 1 लाख रुपए की थी पर एक जीरो ज्यादा चला गया। विकास भाई आपका टेस्ट लेना है मुझे, तो आप सुनिए। मेरी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी पर गलती से मैंने GSTR 1 10 लाख रुपए से भर दिया, एक जीरो ज्यादा चला गया। जीरो क्यों जाता है ज्यादा आपको मालूम ना, क्लरिकल एरर, ह्यूमन एरर, और कई बार आपको मालूम है रिटर्न दिन में तो जाते नहीं, जाते ही रात को है। तो एक जीरो ज्यादा चला गया, गनीमत है एक गया, कहीं 2 होते तो 1 करोड़ हो जाता। पर देना आपको कितना था? मान लीजिए 1 लाख रुपए देना कितना था? मान लीजिए 1 लाख रुपए, पर GSTR 1 10 लाख रुपए क्योंकि एक जीरो ज्यादा चला गया। पर 3B में आप जो टैक्स का पेमेंट करेंगे क्वाइट ऑब्वियस है 1 लाख का ही करेंगे आप। आपके पास स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है क्या फॉर डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड 3B? आ सकता है क्या? से यस एंड नो। 100% आ सकता है, 100% आ सकता है। तो यानी ये लोगों ने एक रिस्क पैरामीटर, और ये कुछ नहीं करते मालूम है, इनका एक DGARM डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, उनने क्या किया है, कंप्यूटर पे फिगर फ्रीज कर दिए हैं। GSTR 1 में मान लीजिए 10 लाख और GSTR 3B में 1 लाख, मिसमैच, स्क्रूटनी नोटिस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, बिना सोचे समझे आ जाएगी। वो ये देखेगा ही नहीं कि आपसे गलती हो गई थी, वो आपको स्क्रूटनी नोटिस भेज देगा। यस, अब प्रॉब्लम ये है, और प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी है और टैक्स पेयर की तरफ से है। पर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम समझ लेते हैं। मैंने डिपार्टमेंट से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा बिमल जी देखिए क्या होता है मालूम है, लोग GSTR 1 भरते हैं 10 लाख रुपए का और क्रेडिट पास ऑन कर देते हैं बायर को 10 लाख का, टैक्स जमा नहीं कराते सर, टैक्स तो 1 लाख का ही जमा कराते हैं सर। ये हमने बहुत भोगा है पास्ट में। उन्होंने कहा हमने बहुत भोगा है पास्ट में, एंड दे आर राइट। कई लोगों ने GSTR 1 भरा है, GSTR 1 भरा है, गलत भरा है फॉर क्रेडिट पास ऑन, पर कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्सेस पे नहीं किए। अब मैंने उनसे कहा सर आप सही कह रहे हैं, आपने एकदम सही कहा सर, पर अभी उनने 75 सबसेक्शन 12
एक्सप्लेनेशन जो 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव है, उन्होंने क्या कह दिया मालूम है? ध्यान से सुनिए, उन्होंने कह दिया है बिमल जी, इसको अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी 9 लाख रुपए सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एंड दैट कैन बी रिकवर्ड without issuance of so-called notice under section 73 and 74. अब आप सोचिए इनने कितना बड़ा ड्रामा कर दिया है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर 1-0 मेरे से गलती हो गई, एंड ध्यान से सुनना है, 1-0 गलती हो गई, आप मुझे कुछ समय तो दीजिए, क्योंकि आप मुझे रिवीजन तो देते नहीं है कि मैं अपना GSTR1 रिवाइज कर दूं। अगर आप मुझे रिवाइज करने का ऑप्शन देते तो मैं रिवाइज कर देता। अब अमेंडमेंट ही हो सकता है सब्सिक्वेंट मंथ में, तो आपको नेक्स्ट मंथ तक का तो टाइम मुझे देना पड़ेगा ना। सो दिस इज व्हाट वी आर प्लीडिंग, बट फॉर्चुनेट पार्ट उनने भी एक सर्कुलर इश्यू कर दिया। उन्होंने कहा बिमल जी ठीक है, आप परेशान हो रहे हो, हम नोटिस भेज देंगे आपको, पर रिकवरी नहीं करेंगे आपकी, आपको टाइम पीरियड मिलेगा अपनी रिप्लाई करने का। बट अब आपको ध्यान रखना है कि इवन देयर इज अ मिसमैच GSTR1 and 3B, आपके पास स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है, एंड लीगली इफ आई रीड, रिकवरी नहीं हो सकती, नो रिकवरी, बिकॉज सेक्शन 37 जहां हम GSTR1 की बात करते हैं, वो बोलता है बिमल किसी भी साल का GSTR1 अगर आपसे कोई ओमिशन हो गया या एरर हो गई, तो आप टिल सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसको अब इस बजट ने कर दिया टिल 30th नवंबर, विच इज येट टू बी इफेक्टिव, आप अमेंड कर सकते हैं। लॉ आपको देता है परमिशन अमेंड करने की, यानी 75 सबसेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन इट्स कॉन्ट्ररी। अगर नोटिस आ जाए रिकवरी करने के लिए होना, तो मैंने आपको आंसर दे दिए। काइंडली जॉट डाउन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 एंड से as a taxpayer I'm being allowed to amend my GSTR1 for any omission and error till September of next financial year, जिसको अब इन्हें कर दिया 30th November, which is yet to be effective. So this is the second case study in front of to all of you. आप लोग अब मुझे बताइए ये सब समझ में आ गई बात? प्लीज से यस इन ए चैट बॉक्स। एक बार आपका यस आना चाहिए कि हाँ ये वाली बात समझ में आ गई है, एंड करेक्टली गोइंग, वेरी वेल डन। सो आपने इस बात को भी एग्री कर लिया, वेरी वेल डन। अब 2 चीजें मैं आपके साथ करूं, एंड दोज आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम ITC पर्सपेक्टिव। मैं 13 रिस्क पैरामीटर तो आज के डिलिबरेशन में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट all 13 risk parameter, but I'm picking up important one. थर्ड केस स्टडी करता हूं, और ये स्क्रूटनी ऑफ नोटिसेस के ऊपर ही है। जब मेरी बातचीत हो रही थी कि मैं कौन सा टॉपिक प्रेजेंट करूं विकास भाई, एंड आई एम टेलिंग टू ईच वन ऑफ यू, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द ऑर्गेनाइजर, all 13 parameters चलिए ठीक है सर। So Ankit Khandelwal ji, yes sir, please take another webinar to complete those 13. सर बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। इतना प्यार कहाँ मिलता है मुझे, पहले 2 करते हैं, 2 उसके बाद देखते हैं टाइम कितना परमिट करता है हमको, एंड 2 इंपॉर्टेंट हैं, और GST ITC पे है। मैं आपका सप्लायर हूं सर विकास भाई, मैं आपका सप्लायर हूं और आप मेरे बायर हैं कैलकाटा में, मैं दिल्ली में, आप कैलकाटा में। अब समवॉट मैंने आपको अगस्त 2018 में माल सप्लाई किया था, अगस्त 2018 में मैंने अपना GSTR1 भी भरा जो आपके 2A में आ रहा है, मैंने 3B भी भरा जो आप देख पा रहे हैं कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी किया है। अब मेरे यहाँ पे मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन, सप्लायर के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई 2020 में, सर्च हुई, और उनने पाया कि बिमल जैन ने इनएलिजिबल क्रेडिट ले रखी है, या बिमल जैन टैक्स कॉम्प्लायंट नहीं है, सप्लायर इज नॉट ए टैक्स कॉम्प्लायंट।
they have cancelled my registration with retrospective date from July 1, 2017. मेरा registration उन्हें cancel कर दिया. अब कैलकाटा की अथॉरिटी आपके पास पहुंचती है, रिसिपिएंट बायर बोलती है विकास भाई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. आप पूछते हैं क्यों नहीं मिलेगा सर? नहीं नहीं, वो आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, या सप्लायर ने जो रजिस्ट्रेशन लिया था बाय वे ऑफ फ्रॉड, कल्यूजन, सेपरेशन, या सप्लायर इज नॉट टैक्स कॉम्प्लायंट, ही इज नॉट फाइलिंग हिज रेगुलर रिटर्न. अब हम आपको क्रेडिट नहीं दे. सप्लायर रजिस्ट्रेशन गॉट कैंसिल्ड with retrospective date from July 1, 2017. This is one of the risk parameter in this instruction for sending the scrutiny notices. अब मैं आपसे पूछूं, जो मेरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप फिर रिप्लाई भी इसका तैयार करेंगे तो रिप्लाई बताऊंगा, रिप्लाई कैसे आप तैयार करेंगे. क्या आपकी क्रेडिट, बायर्स की क्रेडिट, ओह आशीष अग्रवाल जी ने भेज दिया बकायदा, सर DGGI is sending such notices. और एक हमारे नवीन सिंगल जी हैं, मैं कुछ बोलूं उसके पहले उन्होंने एक LGW इंडस्ट्रीज का नाम भी डाल दिया. सर इसी को तो एक कलकत्ते का जजमेंट है ना सर. देखिए कैलकाटा का वेबिनार, कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट मुझे कोट करना है आपको. लिसन वेरी केयरफुली. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एंड आई एम आस्किंग ईच वन ऑफ यू, whether the buyer's credit, recipient credit can be denied because supplier's registration got cancelled with retrospective date. क्या आपकी क्रेडिट डिनाई हो सकती है? Say yes and no. पहले आप yes and no कीजिए चैट बॉक्स में. सो आप सब नो बोलेंगे पक्का था, पर रिप्लाई कैसे करेंगे? रिप्लाई तो ऐसे yes no करके होगा नहीं. रिप्लाई तो yes no करके होगा नहीं. तो अब आपको इस स्क्रूटनी नोटिस की रिप्लाई बनानी है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे सर एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. आप ध्यान से सुनिए, मैंने चारों कंडीशन सेटिस्फाई की थी. मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, मैंने गुड्स रिसीव किए, मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है, 2A में भी आ रहा है, और 2A में मैं देख पा रहा हूं कि उसने GST या 3B भी भरा था. एंड बीइंग रेसिपिएंट आई एम रेगुलरली फाइलिंग GST रिटर्न. तो मैंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के चारों कंडीशन सेटिस्फाई की. दूसरा आंसर आप क्या करेंगे? सर जब अगस्त 2018 में ट्रांजैक्शन हुआ था, we both are having active number, supplier and recipient. And the argument is, in 2020, department may be taking any inspection search against the supplier, cannot make my transaction a past period, that this is credit is not available. And this is ineligible credit. नहीं हो सकता. सर आपने 2020 में एक इंस्पेक्शन की, सर्च की, और आप कहते हैं अब अगस्त 2018 की ट्रांजैक्शन बेकार, इनएलिजिबल. नो वे. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि सप्लायर्स एंड रिसिपिएंट आर इन कनाइवेंस. Then only you can dispute the credit. Otherwise, you can't dispute the credit of the period when they were having the active number. Onus lies on department revenue to prove that. Am I clear on second point? Please, आप लोग मुझे बताइए. Am I clear on second point? Say yes in a chat box. Am I clear in second point? Connivance means Hindi चीनी भाई भाई. डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ने जानबूझ के बेईमानी की है. ऑनेस्ट और जेन्युइन टैक्स पेयर है, बायर है, तो वो बोलेगा सर मैंने तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई की. आप ये प्रूफ कीजिए ना कि मैंने सप्लायर के साथ मिलकर कोई चोरी की है. Am I right? तो नहीं कर सकते. There are two judgment from Calcutta High Court.
LGW Industries Limited, and this judgment was relied upon in very recent judgment, Sanchita Kundu. Sanchita Kundu. Please. अब मैं थर्ड आर्गुमेंट पे आता हूं. थर्ड आर्गुमेंट ध्यान से सुनिए. नवीन सिंगल जी ने डाल दिया, कैन वी टॉक अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. सर जो थोड़ा बहुत जीएसटी कर रहे हैं ना, दे आर डेवलपिंग एंड ग्रोइंग फास्टर. हम और मैं तो ऑलवेज ये कोशिश करता हूं, सबका साथ सबका विकास. मतलब जो करे सब मिलके करे, सब मिलके प्रोफेशनली एक्यूमेन बढ़ाएं अपना. अब सप्लायर का रजिस्ट्रेशन मान लीजिए इस वजह से कैंसिल हुआ. रीजन मैं बताता हूं आपको. इसलिए कैंसिल किया गया कि सप्लायर जो अपने वेंडर से माल लेता था L1 एंड L2, मैं बिमल जैन दिल्ली, मैंने जिससे माल लिया वो L1 भी हो सकता है या L2 भी हो सकता है. उसने सिर्फ GSTR 1 भरा था. इनवॉइस फाड़े थे कलकत्ता की लैंग्वेज में, और GSTR 1 भरा था, पर 3B नहीं भरा था, टैक्स का पेमेंट नहीं किया था. और यही क्रेडिट मान लीजिए L2 वेंडर था, L2 ने L1 को दिया, L1 ने उसी क्रेडिट को यूज किया, 3B पे किया और बिमल जैन को दे दिया. बिमल जैन ने भी क्रेडिट ली, 2A में आ रहा था और उसी क्रेडिट से अपना 3B भरा. अब डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि बिमल की क्रेडिट इनएलिजिबल है. बिमल ने जो इनएलिजिबल क्रेडिट ली है बिकॉज ऑफ फेक इनवॉइसिंग, इसीलिए हमने बिमल जैन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, और आपने जो क्रेडिट ली है वो इनएलिजिबल है, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी. तो आपका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. एक लीगल मैक्सिम है, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया. लेक्स नॉन कॉजिट ad impossibilia. You cannot compel a person to do something impossible. You cannot. मैं क्या आर्गुमेंट लूंगा मालूम है? मैं आर्गुमेंट कोर्ट में ये लूंगा, मिलॉर्ड, मैं आपकी तरफ से आर्गुमेंट लूंगा, रिसिपिएंट की तरफ से आर्गुमेंट लूंगा. I will say to the lordship, मिलॉर्ड, at most I can see the transaction which is being done with the supplier registered in Delhi on GST common portal. I can see with a credit coming in my 2A because GSTR 1 filed by the supplier from Delhi. I can only see supplier is paying the taxes through 3B or not. This much only I can see on GST common portal. Beyond that, there is no window available. Listen very carefully. उसके beyond जाके मैं कुछ नहीं देख सकता, L1, L2 कुछ नहीं देख सकता. मुझे नहीं मालूम कि बिमल जैन सप्लायर ने आगे किससे माल लिया है और उनने टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया. सो यू कैन नॉट पुट अ कंडीशन ऑन मी. डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, क्योंकि मेरे पास कोई विंडो अवेलेबल नहीं है. हेंस यू कांट डिनाई my credit, buyer's credit, recipient credit because of doctrine of impossibility, unless you prove connivance between supplier and recipient. Please tell me, ये जो doctrine of impossibility मैंने आपसे discuss किया, am I clear to all? Please tell me, am I clear to all? Say yes in a chat box. कि सर एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया है, अच्छी तरह से, कहीं भी if and buts नहीं होना मांगता. All right, thank you very much. आपका इतना यस आ जाए तो that is more than sufficient. यानी आपने मान लिया, it is very clear. So scrutiny notices आपके पास आएंगे, but need not required to worry. Need not required to worry. तो एक मैंने थर्ड रिस्क पैरामीटर दिया, मैं चौथा रिस्क पैरामीटर कनेक्ट करता हूं आपसे, कनेक्ट करता हूं. गौरव भाई थे, गौरव भाई जब डिस्कशन कर रहे थे तो आप लोग भी गौरव भाई का प्रेजेंटेशन देख रहे थे और आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया था, विकास भाई ने क्वेश्चन उठाया था, किसने उठाया था मुझे नहीं मालूम, बट आई एम रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट. आपने कोई क्रेडिट गलत ले ली, राइट? हो सकता है ली होगी 17, 18, 18, 19, 19, 20, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, हमने क्रेडिट गलत ले ली अपनी बुक्स में.
अब आपको मालूम पड़ा कि यार ये तो क्रेडिट गलत ले लिए 17, 18 में, 18, 19 में, तो मुझे मिलनी नहीं थी। तो आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करते वक्त आपके सामने कुछ सिचुएशंस आएंगी, कुछ सिनारियोज आएंगे। पहली सिचुएशन के क्रेडिट आपने जो गलत ली उसको यूटिलाइज कर लिया, और आप सब मुझे चैट बॉक्स में सही सही आंसर देंगे प्रॉपर तरीके से। क्रेडिट गलत ली और आपने यूटिलाइज भी कर ली। अब गलत ली है तो रिवर्सल तो मारना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट लगेगा क्या? इंटरेस्ट लगेगा क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड? बताइए यस और नो। 100% लगेगा। What is the rate of interest? 24 or 18? 24 or 18? 18% लगेगा। 18%. Ruchi, it's not a case of ITC mismatching. It's a case of wrongly availed credit. 18% rate of interest going to be applicable. Am I clear to all? अब दूसरा सिनारियो, आपने क्रेडिट ले ली, गलत ले ली, पर यूटिलाइज नहीं किया। अब आप रिवर्स कर रहे हैं। इंटरेस्ट लगेगा क्या? इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल। नो इंटरेस्ट। And for your information, with retrospective date, July 1, 2017, Section 50, subsection 3 got amended very recently with this budget. Now, this clause is yet to be notified, but this is applicable with retrospective date. यानी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब मैं एक चीज पूछूं, मान लीजिए आपने अगर इंटरेस्ट दे दिया हो, गलती हो जाती है ना, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी और आपने इंटरेस्ट दे भी दिया है, बट ने कहा कि रॉन्गली अवेल बट नॉट यूटिलाइज, नो इंटरेस्ट, पर आपने इंटरेस्ट दे दिया। कैन वी गो फॉर रिफंड? से यस एंड नो इन अ चैट बॉक्स। 100% we can go for refund. 100%, Ashish. When this clause is now amended with retrospective date, unless unjust enrichment, अगर वो वर्डन मैंने बियर किया है तो मैं रिफंड लूंगा, डेफिनेटली लूंगा रिफंड लूंगा। इस पार्ट को मैंने कहा, लेकिन एक पार्ट आपने किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मुझे चेक करना है। इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा on reversal of wrongly availed credit but not utilized. पेनाल्टी लगेगी 73 और 74 की, with the penalty going to be leviable. Okay, maximum answer is no. Now listen very carefully. Ruchi Shukla is saying no fraud involved. For 73 and 74, Gaurav Bhai must have communicated to you the so-called notice for non-fraud cases 73, for fraud cases 74, and when so-called notice can be issued for non-payment of tax, short payment of tax, wrongly availed credit, or wrongly utilized credit, or erroneous refund, 5 parameter. So as per 73 and 74, even wrongly availed credit is liable for the penalty, either under section 73 or 74. So this is the mismatch as on date. I was talking to one of the government officer and I said, sir, we are on the verge of 5 years journey of GST. सर आप इंटरेस्ट के प्रोविजन में तो चेंज कर देते हैं, यू आर मेकिंग चेंज इन इंटरेस्ट प्रोविजन, बट corresponding change which is required under section 73 and 74 you are not touching, and department is issuing notices for the penalty for reversal of wrongly availed credit but not utilized. Sir, this litigation is unwanted litigation. Kindly create synergy, synchronization, that एक सेक्शन में जब आप चेंज करें तो पेरीमेटेरिया केस है ना,
73, 74 में भी कर देते हैं आप. So this is what on wrongly availed credit. Am I clear to all? Am I clear to all? Say yes, so that this get clarified and I should move forward. Now let me take up the next case and then open house, open query. जो भी विकास भाई क्वेश्चन करेंगे मैं सारे आंसर दूंगा, सारे आंसर दूंगा. And this is pertaining to very important one. किसी ने मुझे चैट बॉक्स में भी पूछा था, रुचि शुक्ला जी अभी से ग्रेट सर थैंक यू कर रहे हैं. रुचि जाना नहीं है, जैसे ही देखें कि ग्रेट सर थैंक यू, मुझे लगा आप जा रहे हैं, आप जाएंगे नहीं, आप तब तक नहीं जाएंगे. और देखिए मजा कब आता है मालूम है, जब आप साथ रहेंगे और पूरा हम लास्ट केस स्टडी, फिर हम ओपन हाउस कर लेंगे. लास्ट केस स्टडी. आपका सप्लायर हूं मैं दिल्ली में, आई एम रजिस्टर्ड इन दिल्ली. You all are my buyer from Calcutta, recipient in Calcutta. You have paid the amount to me. You have paid the amount to me when I raised the invoice. Let's say 10 lakh rupees and 18% IGST charge. You have paid the amount to me. I have not paid the taxes through GSTR 3B. So I have filed my GSTR 1, which is auto-populated for recipient in 2A or 2B, but supplier has not deposited the tax through GSTR 3B. He has collected the tax from the recipient, from the buyer, but he did not deposit the tax with the government exchequer. और ये बहुत अच्छा point है, मेरे पास एक notice आई है अभी और demand खड़ी हो गई है. मैं कैसे argue कर रहा हूँ? I'm going to give my food for thought to all of you, and I'm sure you'd be liking those pointers today, so that you can enjoy how to defend such cases. Now here department is coming back to you and asking you, buyer, recipient, you should reverse credit. That's what they're saying and sending the notices, scrutiny notices also. आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि आपके सप्लायर ने जमा नहीं किया. आप लोग मुझे बताइए आपको क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? से yes and no. Facts तो मैंने आपको बता दिया. Please tell me whether credit is available or not available. Say yes and no in a chat box. आप लोग yes भी करेंगे, no भी करेंगे. आशीष जैन हैं, उन्हें ना कहा कि नहीं मिलेगी. Section 16 subsection 2 clause C बोलता है कि you're not satisfying one of the condition, your supplier has not paid the taxes, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. विकास भाई आपका क्या कहना है, मिलेगी क्रेडिट? सर केस आप हैंडल कर रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगी. ओहो विकास भाई, अब तो आपने मेरे पर डाल दिया कि मैं अगर हैंडल कर रहा हूं तो बिल्कुल मिलेगी. चलिए बिल्कुल मिलने के आर्गुमेंट करते हैं, बिल्कुल मिलने के आर्गुमेंट करते हैं. It is the argument in line with DY Vittal. It is the repeat again. In line with DY Vittal judgment of the Madras court. Apart from DY Bethel also, I will give you some of the new inputs which is not being discussed anywhere. So listen very carefully. Let me take you to pre-GST era. Pre-GST era, the same dispute arises whether credit can be denied for the buyers, recipient for non-payment of taxes by the supplier. Central Excise की जो सैंडविच में क्रेडिट मिलती थी, KK Industries Limited. Honorable Supreme Court has said, sir ये म्यूट कराइए सर. May I request panelists to mute themselves? Okay, listen now. So Honorable Supreme Court has, Mr. Basu, can you mute yourself? Sutapa ji, you are continuously, hello. Okay, all right, listen now, listen now. Honorable Supreme Court has said credit can't be denied for the fault of supplier of non-payment of taxes. All the High Court judgment in VAT perspective in favor of a taxpayer, including Arise India Delhi High Court judgment, where Honorable Supreme Court has dismissed the petition
appeal, SLP, against the Delhi High Court judgment. Nothing was discussed on merit, but maximum all the High Court judgment in favor of a taxpayer, except Bombay High Court judgment, Mahakottan Lakshmi case. In GST, we got Madras High Court judgment, DY Bethel Enterprises, an issue watch, where the credit can be denied for the recipient, for the buyers. And the argument which was taken before the court was, buyer has paid the amount to the supplier. Why the action will not be taken against the defaulting supplier? Why reversal would be demanded from the recipient, from the buyer? And Honorable Madras High Court has said, unless investigation, action taken against a defaulting supplier, you cannot demand recovery from the recipient and buyer. Next argument. Until 2A came into the picture, because bhai, 2A कब आया? Beginning of 2019. मान लीजिए अगर पुराना पीरियड है 17, 18, 18, 19 का 2A नहीं आया, तो आपको कहां मालूम था, बायर को कहां मालूम था कि सप्लायर even after collecting is not depositing the tax? Doctrine of impossibility. Lex non cogit ad impossibilia. Buyer was not having 2A available before him. उसे नहीं मालूम था कि supplier even after collecting not paying the tax. So this is the argument prior to GST or 2A. अब post GST or 2A का argument एक लेते हैं. I do not know आप लोगों ने कितना बजट 2022 देखा है, मुझे नहीं मालूम. बट एक बजट 2022 में एक प्रोविजन आया है, बहुत अच्छा प्रोविजन, एंड दैट इज हेल्पिंग मी इन दिस पर्टिकुलर केस. सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 नाउ गोइंग टू बी अमेंडेड, एंड 41 सबसेक्शन 2 में ये बोला उन्होंने कि अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो बायर को रिवर्सल करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को रिवर्सल करना पड़ेगा along with interest, along with interest. और जैसे ही सप्लायर पे कर देगा आपको वो क्रेडिट मिल जाएगी irrespective of any time limit. अब इस प्रोविजन को जरा ध्यान से सुनिए, because this is the important provision जिसके ऊपर अभी कहीं कोई डिस्कशन आज तक नहीं हुआ. So listen this argument very carefully. ये 41 subsection 2 क्यों amend किया गया मालूम है? DY Bethel Enterprises में ये हुआ कि Honorable Court ने कहा you can't demand reversal from the buyer for the fault of supplier of non-payment of taxes, right? This was the judgment coming from DY Bethel Enterprises. उन्होंने लॉ को अमेंड कर दिया. उन्होंने कहा नहीं नहीं, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं दिया ना, अब आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. यानी अब वो कोर्ट में बोलने वाले हैं, कोर्ट में आर्ग्यू करने वाले हैं, my lord, why we are demanding reversal? Because there is provision 41 subsection 2, and as per this provision recipient has to reverse along with interest. Yani they are going to justify their point why they are demanding reversal. यहां तक तो उनकी बात मुझे समझ में आ गई. अब इसी का फायदा मैं लेने वाला हूं. And this is prospective clause, not the retrospective one. ध्यान से सुनिएगा. This is prospective clause, not the retrospective one. Now, I'm going to argue before the court and say, my lord, when law is now saying reversal and that too from a prospective date, then this is not applicable for the past period. Hence, reversal cannot be demanded from the recipient and buyer if supplier defaulted for non-payment of tax. एक ही आर्गुमेंट को मैंने डिपार्टमेंट से करवाया और यही आर्गुमेंट मैंने अपने फेवर में लिया. प्लीज टेल मी, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? से यस और नो इन ए चैट बॉक्स. मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ गया ये वाला आर्गुमेंट. यानी पास पीरियड के लिए you cannot demand reversal. You go and collect recovery from the defaulting suppliers. Yes.
सो दैट्स वेरी गुड। यानी आप लोग अगर इतने लोगों ने एग्री कर लिया कि हाँ ये चीज है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट्स वेरी गुड। यानी मेरी बात आपको समझ में आ गई, दैट्स वेल डन। एब्सोल्युटली, राहुल ने कहा एब्सोल्युटली। सो आई कैन ऑलवेज डिबेट एंड से यस सर, रिवर्सल का प्रोविजन पर्सपेक्टिव है, तो पास पीरियड का मुझसे रिवर्सल नहीं मांग सकते। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। नाउ द लास्ट पॉइंट, देन आई विल समराइज। यस्टरडे वाज इंटरनेशनल एमएसएमई डे। आज मैं एक सीआईआई का एक प्रोग्राम था, सीआईआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन 5 years जर्नी ऑफ जीएसटी। आई वाज देयर 3:30 to 5 o'clock देयर। 5:30 से 7 o'clock मैंने आपके साथ तय किया, आपके साथ, आप सबका साथ सबका विकास। एक पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उन्होंने मुझसे पूछा, सर 5 years जर्नी ऑफ जीएसटी में आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एमएसएमई के लिए क्या देखते हैं? मैंने क्या पॉइंट कहा है, सुनिए जो मैं आपसे शेयर कर लूं। मैंने कहा एमएसएमई, स्मॉल सेक्टर, medium sized sector, they need support from the government. I'm a chartered accountant. I'm raising my invoice today to my client and customer. मुझे पेमेंट नहीं मिलता, मुझे पेमेंट ही मिलता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद। पर मुझे टैक्स जमा कराना है अपने पॉकेट से, बिकॉज जीएसटी इज ऑन एक्रूअल बेसिस। मुझे क्रेडिट, आपको तो क्रेडिट मिल जाएगी, पर मुझे तो टैक्स जमा कराना पड़ेगा ऑन एक्रूअल बेसिस। सप्लायर को टैक्स जमा कराना पड़ेगा ऑन एक्रूअल बेसिस। बायर को क्रेडिट मिल जाएगी विद द कंडीशन ऑफ 180 days। अगर आप नहीं करेंगे पे, you fails to pay within 180 days, then you need to reverse along with interest. मैंने उनसे कहा, सर एसएमई, एमएसएमई, जीएसटी on accrual basis. First, I have not collected the money, but I need to deposit the money. If I don't deposit, rate of interest is 18% per annum. Can you think of 18%? यानी you're asking me, विमल, बैंक से लोन ले 12% पे और जीएसटी जमा करा, नहीं तो तेरे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। मैंने बोला, सर एक पार्ट तो ये हुआ, दूसरा पार्ट जब मैं रिफंड फाइल करता हूं डिपार्टमेंट में, तो पहले तो मुझे रिफंड ही टाइमली नहीं मिलते, और अगर डिले हो गया तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मालूम है आप लोगों को? 6%, 6%। तो डिपार्टमेंट डिले करेगा तो 6%, और टैक्स पेयर डिले करेगा तो 18%। वे द पैरिटी, वी वांट टू हैव पैरिटी लाइक जीएसटी लॉ में, पर नहीं आ रही है। इट इज नॉट हेल्पिंग स्मॉल सेक्टर एंड मीडियम साइज सेक्टर। देयर हैज टू बी सम प्रोविजन चेंज। इट कैन नॉट बी लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट बीइंग पेड, मेरे क्लाइंट ने मुझे पे नहीं किया, एंड सेकेंडली रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% टू हाई। We need to have that kind of support. So मैंने एक food for thought दिया, which I was sharing on my journey of 5 years journey of GST at CII forum. Thank you to each one of you कि आप लोगों ने मुझे आज मौका दिया। स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न, स्क्रूटनी नोटिसेस आपके पास आते हैं। कुछ मैं ओपन क्वेश्चन जो है वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद देन आई विल आस्क 2-3 क्वेश्चन एंड देन वी विल कंक्लूड टुडे। लेकिन एक चीज मैं आप सबसे पूछूं, we have got around 160 participants as of now. 160 participants as of now. Scrutiny notices, which department is saying, I given a flavor of what kind of scrutiny notices normally being sent by the department, and I given food for thought कि आप कैसे prepare करेंगे अपने आप को, how you are going to handle such scrutiny notices. I'm sure आपको एक fair, you must have got a fair idea that whenever you are getting scrutiny notices, आपको prepare कैसे करना है, handle कैसे करना है, और चीजें आप डिपार्टमेंट के सामने कैसे आर्ग्यू करेंगे। प्लीज टेल मी, आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? Have you understood it properly so that it is making sense for 1.5 hours, 1.5 घंटे हम साथ बैठे हैं और हमने पूरी कोशिश की एक दूसरे को समझाने की। So I'm sure you must have got it fairly. So मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह कोशिश की,
Now I'm handing over the platform to the organizer and they can ask any query. Maybe 5-10 minutes we can take that query and then we will conclude today's session. और आप लोग को आज मजा जरूर आया होगा. I'm sure you must have watched this movie in a different style, different way. कि GST की हम चीजें कर रहे हैं, discuss कर रहे हैं, but practical way, in a different style altogether. So thanks once again to each one of you. Handing over to you, Vikas ji. Yes, thank you, sir. Naveen ji. Vikas ji, thank you so much. Yes. Bimal sir, thank you so much. Actually, we have a lot of questions in the chat box, sir. If we can take them up one by one. Sir, Anuj ji has been asking these questions a couple of times. SSC gets ASMT 10 for 4 months during 17-18 when 2A was lesser than 3B. But overall, the claim amount is less than 2A for the whole year. So how to reply? I think, sir, you can just... I given the answer very specifically yes, and in a yes. detailed manner. Yes, sir. You have already given this answer. I don't think we have to add further. Yes, sir. And also, Shubham ji is asking for GST suspension period 2A and 2B report of that month not reflected in ITC. How can we take ITC of that invoice, sir? I think you have also that is also I have answered very, yes, sir, in a detailed manner. So then we have one question from Ashish ji. Invoice value is 10 lakh, payment made 9.8, 20,000 is discount. Can department ask for reversal of ITC for 20,000? No way. Discounts are normally being considered transaction value, price paid or payable, as per section 15. That is at the time of supply. Even after supply, you can issue a credit note within GST as per section 34. So that is permissible to you and they cannot demand reversal to that extent. And just giving example, let's say you purchase a particular goods at 100 rupees and paid 18% GST, 18% credit you have taken. For either or region, you're selling at 90 rupees. For either or region, that may be obsolete stock, that may be discount stock, that may be stock clearance, anything, 90 rupees. So you may have credit remain with you for the extent of 10 rupees. Do you require to reverse credit? No, not at all. It will continue to be in your books of accounts. No reversal required. That is what the provision. आपको कोई reversal नहीं करना. Please. And sir, Akash ji is asking that is there any RCM on spectrum fee services? And for yes, sir. This is the disputed point for spectrum fees, mining. Lot many things are going on where dispute is going on as on date. So of course we can always debate and argue whether this is any service provided or this is towards any particular fees given as a levy, levied by a government. So we have to understand from that perspective whether they have given any services to me. Unless there is service, there is no chargeability, whether service tax or GST. So to my mind, these are disputed points, and definitely we can argue there is no supply of service. Why service tax and GST are going to be levied under reverse charge? It is only a government levy for a particular usage. To my mind, we can always debate and litigate the matter. And sir, Ashish ji is asking that under section 16 subsection 2C says ITC cannot be claimed if supplier has not paid taxes. Then how question of reversal of ITC under 41.2 arises? No, I didn't get this query properly. Please repeat again. Sir, 16.2C says ITC cannot be claimed if supplier has not paid taxes. Then it is one of the conditions for availing credit. But then, what we are putting forth, we are saying that I have legitimately paid the amount to the supplier. Why credit would be denied? If at all default lies, it lies with the supplier. So if he's saying that I have not availed the credit because supplier has not paid the taxes, then there is no question of reversal. But which taxpayer would be willing to reverse credit
and they will not avail credit, even though he has paid to the supplier and supplier has not deposited. Is it not double amount, double problem for you? First, you have paid to the supplier. Now you're not availing credit. Is it double cost for you? You are creating a situation for the government department only. You will definitely avail the credit. I'm saying that availing credit, it cannot be litigated because of 41 subsection 2. Then reversal cannot be demanded. That is the argument I gave. And sir, next question is from Pankaj Ji that GST got suspended for 2 months, but now active. Can SSC get credit for purchases made during suspension period? Why not? 100%, 100%. When his suspension become active, then it is like operational now. Operational. Maybe for intervening period, it was suspended for either or region. And sir, PK Ji is asking wrong IGST. I think his question is something like that. Ki IGST was availed and utilized wrongly against CGST or SGST tax liability. So is it? But the total amount of but the total amount of input remains intact. So is interest applicable? To my mind, no. It is only the problem that we have used the wrong head, wrong bucket for discharging the output tax. But that credit was available to me, and my answer is, there is nothing like non-payment of tax or short payment of tax. Only the wrong head is being used. And the government must give the advantage to the taxpayer, because in the past 5 years, a lot of things we have seen as a glitches. And since a wrong head has been used for discharging the tax, so there is nothing like shortfall or non-payment. Why interest going to be leviable? That would be my argument. But sir, on a personal front, I would like to say that the government is asking for interest in these cases if interheads adjustment have been made. Naveen ji, they would be asking even for the things which is not existing. It is a matter of our accepting and not accepting. I'm saying that मैंने एक wrong head से payment कर दिया, tax का payment कर दिया ना. Section 50 तभी लगेगा जब non-payment and short payment है. आपको मैं एक और justification दूं नवीन जी. Yes. आपने कोई इंट्रा को इंटर ट्रीट कर लिया या इंटर को इंट्रा ट्रीट कर लिया, आपको करेक्ट टैक्स पे करना है, बट क्या इंटरेस्ट लगेगा? क्या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना. तो वहां भी इंटरेस्ट मांग लेते वो लोग. वहां भी तो आपने रॉन्ग टैक्स पे कर दिया था ना. उन्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाया? लेजिस्लेटर का इंटेंशन ये था कि उसने गलत दे दिया है. देना उसको आईजीएसटी हेड में था, लेकिन उसने सीजीएसटी एसजीएसटी हेड में दे दिया. तो आईजीएसटी मांग लो बट इंटरेस्ट मत मांगो. मैंने उसी आर्गुमेंट को आपके साथ जोड़ा. So I hope I'm making sense for understanding sake. Sir, Akash is asking, RCM not discharged for 17-18. Is it possible to take ITC now and pay with interest? मेरे हिसाब से तो 100% है. मैंने आप पास वीडियोज में जाइए देखिए, मैंने तो कहा है unregistered supplier RCM liability pay along with interest, raise the self invoice in current month and avail the credit. There is no bar. But sir, I think some of the speakers have a different view. I will not get into see, that. Yes. This is GST. This is what GST. You will get speakers saying yes, speakers saying no. Liking and choice lies with you. I'm not forcing you should like me, but to my mind, RCM from unregistered supplier, as per rule 36B, subject to payment of tax, self-invoice is the eligible document, which is raised today. I'm only not complying GST procedural part. But if self-invoice generated today, then that is today's dated. So section 16, subsection 4 going to be applicable only for today's dated self-invoice. So who are saying what may be of your choice and liking. Unmute yourself, Naveen. Sir, I think most of the questions have already been answered and the question list is too long. Now I would request Vikas ji to kindly summarize and take over. Thank you. Thank you, Naveen ji. And
commenting upon the deliberation of Vimal sir ji or Gaurav ji is not in my capacity. कि इन्होंने पूरा सेशन में जिस तरह से इन्होंने पूरा डील किया है, अभी तक पूरे माइंड में उनके वर्ड्स घूम रहे हैं, तो आई एम नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट एनी सेंटेंस बिफोर देम. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द कैलकाटा एंड शेयरिंग योर व्यूज. Now I would like to hand over mic to the Girdhari Sharma ji for tendering the formal vote of thanks. Thanks sir for such a lovely session. जैन सर ने इतना अच्छा समझाया है कि अभी कुछ पूछने का जगह ही नहीं रहा. इट वाज सो entertaining as well as informative with a practical approach how to deal with the subject. Thanks sir. We are looking forward to further session on the subject from you sir. Thanks sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Vikas ji. Thank you, all my friends, for a patient hearing. Thank you. Thank you, Naveen. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you.